हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी और फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। हाँ, आज डेफिनेटली चेल्सी फोकस स्ट्रीम है, बैक टू दैट। लेकिन वी ऑल नो वी ऑल्टरनेट बिटवीन अ लॉट ऑफ कंटेंट और मैं फील नॉस्टैल्जिक कर रहा था भाई आज, ऑब्वियसली बिकॉज दी स्पेशल वन जोजे मुरिन्यो का बर्थडे है। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी रिपब्लिक डे यार फॉर एवरीवन इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन आउट देयर जो भी चेल्सी फैंस है भाई, और जनरली ईपीएल फैंस, रियल मैड्रिड फैंस, इवन स्पर्स फैंस मैं बोलूंगा अगर कोई है तो, ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भाई जोसे मुरिन्यो से रिलेट करते होंगे। एंड कहीं ना कहीं आई नो दैट अब्रामोविच एरा था, a lot of things happened in Chelsea in the last 20 years। उससे पहले obviously we had some history which I would like to share आज। एंड ऑफ कोर्स जो रिसेंट हुआ है तो लॉट ऑफ थिंग, लेकिन आई थिंक जोसे मुरिन्यो एक ऐसा काइंड ऑफ व्हाट इज कैटलिस्ट था चेल्सी के लिए, जिसके कारण चेल्सी आर इन द ग्लोबल मैप, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसलिए मैं कर रहा हूँ चेल्सी की बातें आज। लेकिन बहुत दिनों से मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट एक साल से everyone keeps asking me, who are your best Chelsea players, best Chelsea 11। मैंने एक बार शायद आई थिंक फतेह एंड कपल ऑफ अदर्स के साथ स्ट्रीम में किया है व्हेन वी आर डूइंग अ वॉच अलोंग, लेकिन एक फोकस स्ट्रीम या फोकस वीडियो नहीं किया है विद माई, एंड दैट इज माई चेल्सी 11। ऑफ कोर्स हम आपके भी जानेंगे एब्सोल्युटली फॉर ऑल द ईपीएल लेवल्स स्पेशली, बट ऑफ कोर्स जोजे मुरिन्यो को हम सेलिब्रेट करेंगे सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले सब लोग जो भी यहाँ है पर सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग एज ऑलवेज, डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन। और मैंने शेयर किया है दिस लिंक अगेन ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज ऑन माय सोशल मीडिया, सो आप लोग वो भी लाइक कर सके। तो वील हैव ऑल, मतलब इट्स अ नॉस्टैल्जिक स्ट्रीम, तो आई वांटेड टू डू इट लाइव ताकि मैं शेयर कर सकूं विद व्हाट हिस्ट्री आई नो अबाउट चेल्सी, जोसे मुरिन्यो, क्या मुझे याद है, समथिंग दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। एंड ऑफ कोर्स योर स्पेशल मोमेंट्स भी मुझे मालूम पड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स द प्लेयर्स ऑफ चेल्सी एज वेल एज लॉट ऑफ ईपीएल। हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम थोड़ा बहुत ट्रांसफर्स की बातें हम करेंगे, so don't worry, we'll be covering a lot of current as well, not just nostalgia। तो हम तो definitely will go there। देवेश थैंक्स भाई, मतलब again Manchester United fan will also relate to Jose Mourinho, and that's the best part। कोई भी EPL fan generally will relate to him। Happy birthday to the special one, respect absolutely। हसी बोले next season Chelsea win Premier League। Well, I've seen your messages काफी बार, तो hopefully it comes true हसीब, thanks a lot for that। Anmoldeep, yes, by the way, congratulations to Barcelona and Manchester United कल रात की विक्ट्री के लिए। रोल वुल्फ्स द हाउस, नाइस टू सी यू एज वेल। डरेन भाई कैसे हो, ऑलवेज गुड टू सी यू। जॉन टेरी ऑल द वे। हाँ, ये पोल मैंने डाला है और ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, विल कम टू दैट। लोग बोलेंगे भाई आप एडन हज़ार्ड का क्यों नहीं डाले ऑप्शन, लेकिन अगेन 4 ही ऑप्शन थे, तो मेरे ख्याल से दीज आर लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट चेल्सी की हिस्ट्री, चेल्सी की बेसिकली प्रेजेंस इन द ग्लोबल मैप, I feel these four, at least in the modern era, deserve their names first। Nostalgia, absolutely भाई। Again, मैं जो वीडियो चलाया था in the beginning of the video, I know that lot of people might have missed it। मैं लास्ट वापस से चलाऊंगा। For me, honestly speaking, मैं no two ways about it, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ 1.5 सालों से, बट कभी ना कभी मतलब जस्ट आप लोग भी अपने अपने क्लब्स के फैंस होंगे, वेयर आई मिस चेल्सी, आई वॉच दैट वीडियो एंड इट गिव्स मी गूज बम्प्स ऑनेस्टली, बिकॉज मैं जब 1999 में शुरू किया था चेल्सी को देखना इन द चैंपियंस लीग, एंड 2002 इट वाज बेसिकली इन द प्रीमियर लीग। ट्रस्ट मी, दोज वर द अर्ली डेज, और कोई भी क्लब को फॉलो करते हो, द अर्ली डेज ऑफ द फर्स्ट 2 3 4 4 years, डू नॉट फॉरगेट। हम इतना जीतते नहीं थे बाय द वे, 2000 और 2005 के बीच में हम हार्डली को जीते थे, राइट। फिर भी यार आई कैन नॉट फॉरगेट दोस डेज एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन तो भाई बहुत दैट आई वुड शेयर एज वेल। एब्सोल्युटली ओवरलॉर्ड, थैंक्स टू जॉइन एज वेल। निश्चित भी बिल्कुल भाई, क्या हाल है भाई। अनमोलदीप, थैंक्स अ लॉट। वही है, मतलब दैट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेरियन आई मस्ट से। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया इज इन मी एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, यू ऑल नो दैट इट्स ऑलवेज देयर। प्लीज इंक्लूड माउंट एंड हैवर्ट्स इन ऑल टाइम 11। चलो भाई, मैं इतना क्लू दे सकता हूं that there will definitely be a few people in that all-time 11 for sure, as in from the current team as well। हो सकता है, again मैं 11 ही चूज करूंगा, मैं करूंगा entire squad which is, होता है ना, I relate to certain players, you may relate to other players, वो fair enough है। Sakshat as well, hi कैसे हो। कांटे, yeah, absolutely, कांटे is right up there, absolutely 100%। बिल्कुल यार, टाइगर बीच एब्सोल्युटली। पेपर जोजे, चलो भाई आज के लिए तो मैं बोलूंगा जोजे वेद, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जोजे इतने किया भाई। टू बी ऑनेस्ट, सच में बोलिए आप लोग, ये क्वेश्चन वेद का अच्छा है। मतलब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग मैनेजर्स, मतलब डू यू थिंक, मतलब obviously the Premier League manager, मेरे ख्याल से the best ever Premier League manager, with all due respect to my Jose Mourinho जिनका बर्थडे है आज, I would say that Sir Alex Ferguson takes that, but without a shadow of a doubt, he is the best Premier Least manager ever that has graced, मैं deny नहीं कर सकता उसको।
लेकिन कहीं ना कहीं मतलब डू यू गाइस नॉट थिंक दैट जोसे मोरिन्यो को इतना क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज ऑफ ही केम बैक विद मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पर्स, मे बी दैट इज एन एक्सटेंट, और ही डिडंट डू एज वेल जितना उन्होंने चेल्सी के साथ किया इन बोथ द स्पेल्स, और ऑफ कोर्स द वे ही एंडेड चेल्सी द सेकंड टाइम अराउंड, रीसेंसी बायस होता है कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है द गाय इज नॉट सेलिब्रेटेड एज मच जनरली एज अ मैनेजर, और आई नो वो रेस्पेक्टेड तो डेफिनेटली है, बट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, दिस इज समथिंग स्पेशली फॉर द न्यूअर फैंस, राइट, जो यंगिश फैंस है, दे माइट नॉट हैव सीन अ प्राइम जोसे मोरिन्यो, और हम यहाँ पर रिमेंबर करेंगे कोट्स ऑफ जोसे मोरिन्यो, सब मैचेस, मोमेंट्स, सब चीज में रिमेंबर करेंगे, प्लस चेल्सी 11 हम करेंगे। भाई बाय द वे मैं देख रहा हूँ भाई काफी लाइक्स कम हुए, इफ द मॉड्स कैन हेल्प मी आउट हियर एंड ऑफ कोर्स द मेंबर्स वेल, बिग अप टू देम भाई, सब लोग जो भी यहाँ पर है प्लीज प्लीज लाइक द स्ट्रीम, जैसे टाइगर पीस भी बोल रहे हैं, और लेट्स शेयर इट, हो सके तो आप शेयर करिए, बिकॉज दिस इज स्ट्रीम जहां पर हम बात करने वाले हैं सर्टन हिस्ट्री, सर्टन करंट प्लेयर्स एंड मैनेजर्स की, तो होपफुली देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हमने रिलेट करना है, और ऑफ कोर्स आई वांट योर व्यूज एज आई एम लाइव स्ट्रीम, सो लेट्स हैव मोर पीपल इन। वो कैसे होगा, आप लोग सब लाइक बटन दबाइए, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, वील हैव अ लॉट ऑफ interaction going, and hopefully you all can help me out there absolutely. Jose set up the Chelsea Foundation, he is the special man, bilkul. Bhai, honestly, obviously I was playing for Chelsea and hoping that we'll miss kar de yaar, simply put, lekin I must thank him for that, for missing that. You know that. Jose for me, two best manager after Sir Alex Ferguson. बोल रहे Devesh, interesting. Jose to Chelsea similar to Pep to Barcelona. That's a good comparison overall, 1-for-1. Not exactly because Pep was an ex-Barcelona player as well, so I understand why इतना connect है Pep Guardiola के साथ. लेकिन when it comes to Jose Mourinho, यहाँ पर again for people who might not know, भाई ये देखे 4 times वर्ल्ड बेस्ट क्लब कोच, ठीक है, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, चेल्सी, पोर्टो, 2 टाइम चैंपियंस लीग विनर, वी ऑल नो दैट, पोर्टो और इंटर मिलान के साथ बहुत कम लोग उन्होंने काइंड ऑफ इक्वल किया वहां पर, 3 टाइम्स इंग्लिश चैंपियन, और वो भी इन 2 स्पेल्स, याद रखिए 2 स्पेल्स, सो दिस इज लाइक 2 डिफरेंट चेल्सी टीम्स के साथ उन्होंने चैंपियन बना है, नॉट इजी एट ऑल, स्पेशली इन 14-15 जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा था इन माय ओपिनियन, एंड ऑफ कोर्स इवन बैक देन इन 4-5, क्योंकि उस समय आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड का बवाल चल रहा था, 3 टाइम्स स्पेनिश चैंपियन, और पीपल डू नॉट गिव हिम इनफ क्रेडिट फॉर दिस, आई नो आप बोलोगे कम ऑन, एज इन बीट बेसिकली रियल मैड्रिड में स्पेशली, दैट इज द मेन जो आप बोल रहे हो, बिकॉज ही वाज नॉट द बार्सिलोना मेन कोच, आप लोगों को पता है ही वाज पार्ट ऑफ द बार्सिलोना कंटिजेंट व्हेन इट कम्स टू 98-99, लेकिन इट वाज मेनली 11-12 में रियल मैड्रिड ही वाज द मेन मैनेजर, और उस समय बार्सिलोना ऑफ 2011 आर्ग्यूबली आई वुड से the best team in history of football, and I really mean it. Barcelona of 2011, and that team, basically he has beaten that, and that is absolutely fantastic. Of course, इंटर मिलान के साथ 2 बार जीते हैं, and my friend फतेह would love to join. यार मैं फतेह को भी बोलना था आने के लिए, कोई नहीं. UEFA Super Cup winner with Barcelona again 98 में, he was part of the contingent. Europa League with Manchester United, yes. UEFA Cup winner Porto के साथ, with Porto तो भाई he created history absolutely. And कॉन्फ्रेंस लीग विनर, तो ही इज भाई, मतलब रोमा का हिस्ट्री ऑल्सो ही क्रिएटेड, मतलब इतने सारे चीजें देखो, आप एफए कप हो गए, आप लीग कप्स हो गए, मतलब लिटरली ही इज वन एवरीथिंग, एंड वो भी कुछ मल्टीपल ट्रॉफी, सो आई डोंट थिंक सेलिब्रेटेड एज मच फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड ऑफ कोर्स आज हमें मौका मिला है तो हम डेफिनेटली करेंगे। देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो। और हाउ टू फॉलो फुटबॉल लाइक क्रिकेट, संदीप कुछ नहीं, आप फॉलो करिए, देखिए मैचेस, देखिए जितने मैचेस देखोगे आप, मे बी इट्स 3 in 1 आई वुड से, वॉच मैचेस लाइव ऑन टीवी बीट, और प्ले फुटबॉल सेकंड, और थर्डली मैं बोलता हूँ फीफा, एज मच एज इट्स फीफा ऑन द कॉम्प, ऑन द प्ले स्टेशन, वॉट एवर इट इज, भाई बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे फॉर्मेशंस एक्सेट्रा आप वहां से भी सीखते हो, प्लस प्लेयर नेम्स एक्सेट्रा, सो अ लॉट ऑफ इट विच गोज इनटू इट, ऑफ कोर्स साथ साथ में मैं तो तीनों ही करता था in late 90s and early 2000s. That's how I learned football, to be honest. As Barca fan, I hate that guy while he managing Real and Inter, but as football fan, what a fantastic, bilkul Nishchit cannot forget poking the eye and all that. By again, he doesn't mean it, but you all know that what Jose Mourinho is, why does it. By again, I request everyone here, it's a very special stream for me, honestly it's a very special stream, and मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं यार my Chelsea 11, so hopefully everyone can hit that like button and have more people in. वो कैसे होगा, if you can share the stream,
अगेन मैं कम्युनिटी पोस्ट किया हूँ, मैं ट्वीट किया हूँ इसके बारे में. इफ यू कैन शेयर द लिंक, इफ यू कैन लाइक द स्ट्रीम और लाइक द पोस्ट, ब्रिलियंट रहेगा यार. और शेयर करें तो और भी बेटर है. I think Pep is overhated by people just because he did not choose a fan favorite club and choose City. No, wait, I don't think hate is a word that I would associate close to Pep even. I kind of disagree, but again, will surpass Alex Ferguson? It is quite possible actually. लेकिन I think the reason is हम क्या बोलते हैं ना, is the other way around. वेद मतलब कैसे मैं समझाऊं. आई नो यहाँ पर थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू मेसी वर्सेस रोनाल्डो, ठीक है, a lot of times while दोनों ही गोट्स है मेरे लिए, दोनों ही गोट्स है. मैं हमेशा बोलता हूँ that they are two among the 5 goats that I consider in world football of all time. But कहीं ना कहीं आई थिंक एक मोर हम्बलिश नेचर ऑफ मेसी काइंड ऑफ विंस हिम फैंस वर्सेस अ ब्रैश नेचर ऑफ रोनाल्डो. इट कैन बी द अदर वे अराउंड आल्सो. ब्रैश नेचर रोनाल्डो विंस हिम फैंस. तो कहीं ना कहीं आई थिंक पेप वर्सेस जोसे मोरिन्यो वही लगता है मुझे, दैट जोसे मोरिन्यो वही है पोकिंग द आई, लॉट ऑफ गेम्समैनशिप चलता है व्हेन इट कम्स टू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल दैट. ही विंस अगली, वो सब होता है. सो आई थिंक इतना लव नहीं है कंपेयर टू मे बी अ पेप. आई वुड से इट्स अदर वे अराउंड पेप, but I hear you. Pep can surpass Sir Alex Ferguson if he continues this way. Of course, European trophies is also the key in my opinion. Yes, बिल्कुल. Barca connection is also there. Absolutely, people forget that. इसलिए मैंने दिखाया वो. Jose was the most expressive manager on sideline ever. Ankit भैया बिल्कुल, yeah, one of them for sure. Choose one. Porto, Chelsea, Inter, Real, United, Spurs, Roma. Which Jose is beast according to you? And without a shadow of a doubt, without a shadow of a doubt, it has got to be Chelsea, bro. और मैं बोलूंगा Chelsea the first time around. I think he was absolutely at his एकदम पीक जो बोलते हैं ना, एकदम पीक थे. हाँ, you can argue that he didn't win the Champions League with Chelsea. That is maybe एक चीज जो है ना वो छोड़ दिए चेल्सी में, बट just before coming to that उन्होंने जीता था विद पोर्टो यार. तो he was at his absolute best in my opinion there. I genuinely believe Jose Mourinho between 2004 and 2007 जो थे ना भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल. और also you can say that Real Madrid also you can say, to be honest, because I know that Barca team was the best ever, लेकिन he has gone and beaten that Barca side. I would say that much absolutely. तो यहाँ पर भाई Jack in the house. Jack, nice to see. Oh, Dan Wainbridge, he's so underrated. Ankit, oh God, Wainbridge. Jack, बहुत अच्छा बोला आपने. Thanks for actually putting that, bro. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेल्सी 11 भी, लेकिन पहले थोड़े से जोसे मोरिन्यो, व्हाई इज ही स्पेशल टू चेल्सी, व्हाई इज ही स्पेशल टू द प्रीमियर लीग, व्हाई इज ही स्पेशल टू इंग्लैंड, वो हम देखेंगे. जस्ट वॉट एवर यू रिमेंबर ऑफ दैट मोमेंट, डू लेट मी नो इन द चैट एब्सोल्युटली. और मैं आई विल जस्ट गो थ्रू क्विकली what I feel about Jose Mourinho, why I remember about Jose Mourinho. भाई सबसे पहले for people who do not know, तो ये हुआ था. Of course, Roman Abramovich era had taken over. Roman Abramovich कब take over हुए थे? This was 2003-04. 2003-04 में basically last match of the Premier League था, जहां पर मुझे याद है it was an away game and Chelsea को चाहिए draw against Liverpool. Gronkjaer scored a fantastic goal, or we got a win in fact, or we went to the Champions League, and the rest is history with Roman Abramovich taking over Chelsea. Meanwhile, Jose Mourinho अपॉइंट किए गए थे. बहुत सारा ब्रैश एटीट्यूड था when it comes to media what not. लेकिन सबसे पहला कप कौन सा होता है एक साल में, कोई भी आप बोलो, सबसे पहला कप होता है आपका कार्लिंग कप, जो आजकल बोला जाता है कैराबाओ कप, राइट, द लीग कप बेसिकली. एंड दैट इज वेयर जोसे मोरिन्यो बोले नहीं यार, ये मुझे जीतना ही है. दिस इज हाउ द मोमेंटम ऑफ चेल्सी कैन स्टार्ट अगेन. बाय द वे 2000 के बाद में वी हैड नॉट वन अ सिंगल ट्रॉफी, ठीक है, आफ्टर 2000, एंड दिस वाज अ प्रॉपर ड्रॉट चल रहा था चेल्सी में 5 सालों तक. इतना इन्फ्लक्स ऑफ मनी एब्सोल्युटली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट एट द सेम टाइम बहुत केयरफुल इन्वेस्टमेंट. वी डिडंट गो फॉर रोनाल्डिन्हो एटसेट्रा जो कर सकते थे हम. ही वाज द प्लेयर इन द वर्ल्ड एट दैट मोमेंट इन माय ओपिनियन. फिर भी वेंट फॉर ड्रॉगबा, वी वेंट फॉर जो कोल, डेमियन डफ एंड व्हाट नॉट, रॉबिन, चेक. These were the people that we got, or we got the Carling Cup. In fact, मुझे आज तक याद है ये कार्लिंग कप चल रहा था. मेरा कॉलेज, आई डोंट नो इफ एनीवन नोज बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन बैंगलोर. इफ एनी ऑफ माय इंजीनियरिंग मेट्स आर वाचिंग और विल वॉच, इट विल बी ग्रेट टू हियर योर कमेंट्स. उत्सव नाम का फेस्ट होता है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में. आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एंड आई रिमेंबर बेसिकली दैट it was a fest, and Steven Gerrard I think had scored an own goal in this,
and what could be better for a Chelsea fan? और उस समय Steven Gerrard is already kind of linked to Chelsea already. तो भाई we finally went on to win. उन्होंने पहले स्कोर किया था लिवरपूल, एंड आई वाज एक्चुअली द फर्स्ट द मोमेंट दे स्कोर, जॉन अरीसा स्कोर्ड, मुझे याद है, एंड आई एम लाइक आई रैन टू द हाउस, आई एम लाइक नहीं नहीं मुझे देखना है एब्सोल्युटली, और दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ स्टार्टेड द कमबैक ऑफ चेल्सी, एंड दैट्स वेयर वी वन आवर ट्रॉफी एब्सोल्युटली. पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, दिस वाज वन दैट आई वुड सर्टेनली लाइक टू रिमेंबर ऑफ कोर्स, बट द सेम ईयर, एंड दिस वाज द मोमेंट व्हिच पुट चेल्सी इन द मैप ऑफ से ग्लोबल फुटबॉल. सच में बोलूं तो 50 साल हो गए थे यार, 50 साल हो गए थे चेल्सी को to win a league, and this is where we went basically 50s के बाद में finally in 2005 Lampard scoring the second goal against Bolton Wanderers. It was basically the moment, and trust me भाई already मुझे हो गए थे कुछ साल where I was watching Chelsea, इतना banter मिला था मैंने, इतना banter, and that is where, and Jose Mourinho was obviously on the sidelines. I don't know if you remember, but यहाँ पर देखते हैं, Spurs is the only club where Jose didn't win the trophy in his manager tenure. Exactly, और वो भी छीना गया तो उससे. हो सकता है the Carabao Cup final against Man City he would have won, just saying, and he was sacked just night before. Remember that. Hello to साथ प्ले, कैसे हो? Nice to see. Chelsea 2005 transfer window of his made me love him and his interview. Absolutely. और हम quotes भी देखेंगे. Absolutely, we'll see some quotes as well. But okay, SMVIT graduate here, sir. Nice to know. Nice to know people. But again, यहाँ पर देखते हैं, Jose is probably loved everywhere he managed apart from Spurs. Okay, interesting that. भाई पुडिन या इसके बारे में भी हम बात करेंगे. Absolutely, we will star that. We come to transfers as well towards the end. अच्छा, ओ लॉर्ड बोल रहे हैं, पेप गार्डियोला बोल रहे थे, आई डोंट केयर व्हिच टीम आई कोच, वेदर इट इज हियर एट मैन सिटी और अनदर टीम, बार्सिलोना इज माय क्लब एंड इफ दे कॉल मी आई विल कम बैक. मैंने देखा, आज ही देखा, ओ लॉर्ड बहुत अच्छा आपका कमेंट है, क्योंकि आई थिंक 1 घंटे पहले ही मैंने देखा था दैट ही सेड, आई थिंक ही मेंट दिस इफ ही वाज नॉट हियर इज व्हाट ही मेंट, इज व्हाट आई एम गेसिंग. बट अगेन हैट्स ऑफ टू हिम फॉर रिस्पेक्टिंग हिज ओल्ड क्लब. एब्सोल्युटली. वेद बोल रहे हैं लैम्पार्ड इज द गॉड ऑफ चेल्सी. फेयर इनफ, वी विल कम टू दैट. You were in college in 2005. हाँ भाई, मैं गया था कनाडा, गया था 2012 में यार, 2012 में गया था, और दैट वाज फॉर माय मास्टर्स. तो मैं गया था एमबीए, तो उसके लिए गया था, लेकिन हाँ 2005 में मैं डेफिनेटली कॉलेज में था भाई. आई वाज इन इंजीनियरिंग दैट टाइम. Cristiano Ronaldo, the highest scoring player under Jose Mourinho, the legendary Portuguese player, formed a sensational partnership with his boss at Real Madrid. बिल्कुल. And in fact, Lampard as a midfielder was not far, यार, सच में बोलूंगा. And obviously this was the moment, यार, for people who do not relate to it. मतलब back to back premierships, यार, मतलब क्या ही तो बोलूं, मतलब it was a moment where Chelsea were really there. जैसे जैक बोल रहे, Robben, Duff, Drogba has special place in my heart. This trio, oh god, exactly. For people who watch them live, when I say live, no disrespect जो लोग नहीं देखे live, लेकिन जो गूजबम्स देते थे ना वो लोग, आई थिंक भाई, मतलब आप मैच बैठे बैठे नहीं देख सकते थे. एटलीस्ट पीपल हु फॉलो द प्रीमियर लीग मिनट बाय मिनट, दे गॉट दोस काइंड ऑफ स्टफ दैट इवन चैंपियंस लीग में बोलता हूँ. बट ड्रॉगबा साथ साथ में ये भी बोलूंगा, जैक इन द लीग बहुत बार इरिटेट और फ्रस्ट्रेट भी करते थे, एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्रॉगबा वाज, एंड दैट इज व्हाई as an opposition you wanted Drogba in your team and not in the opposition side. He was a thorn in the opposition side. Matlab, everyone knew that absolutely. Okay, चलो ये देखिए, मतलब टाइगर बेस, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. बट अगेन, फॉर पीपल हु डोंट नो, बैक टू बैक प्रीमियर लीग्स इज वन थिंग, और दिस इज वन मोमेंट. अगेन मैं यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहूंगा. तो इट्स अगेन, ये वाला स्ट्रीम थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाए, लेकिन अगेन इट्स बिकॉज ऑफ चेल्सी नॉस्टैल्जिया, तो इमोशंस विल कम आउट. सो 2007 की बात है. दिस ऑब्वियसली हैपेंड, आपको मालूम है, कार्लिंग कप बेसिकली हैपेंस वेयर समटाइम इन मार्च. सो बेसिकली आई वाज इन राजस्थान, आई बिलीव. मैं मेरे कजिन्स के घर में था, एंड आई वाज ट्रैवलिंग एट द टाइम. और जानते हो, कीड़ा है चेल्सी का मेरे में, प्रीमियर लीग का है, जनरली इंग्लिश फुटबॉल का है कीड़ा, फुटबॉल का जनरली, राइट. तो फाइनल था. इट वाज बेसिकली हैपनिंग इन कार्डिफ. ठीक है, कार्डिफ में हो रहा था. इट वाज नॉट, आई थिंक द न्यू वेम्बली वाज नॉट रेडी अंटिल देन. ठीक है, न्यू वेम्बली उस समय, वेम्बली वाज काइंड ऑफ रीबिल्ट और न्यू वेम्बली बिल्ड नहीं हुआ था. तो 2007 में, रिमेंबर, इन 2007-5 2004-5 में वी हैड ऑलरेडी वन द प्रीमियर लीग. 2005-6 में वन द प्रीमियर लीग. 2007 में मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड कम बैक, प्रॉपर एक प्रॉपर साइड थी उनकी. बट इवन आर्सेनल वाज कमिंग बैक. आर्सेनल वाज हैविंग अ यंग थियो वॉलकॉट एंड व्हाट नॉट, and we went on to beat Arsenal. It was, I think, if I remember, 1-2-1 brilliant victory at Cardiff. बहुत ही अच्छा था. Robben का assist, I cannot forget that, absolutely brilliant assist to Didier Drogba.
who also scored. By the way, talking about that Cardiff game, वो क्यों special है under Jose Mourinho? I think Jose Mourinho is the kind of guy which took Terry to the next level. हाँ, I know that people say Ranieri के अंदर he played so much football as well. लेकिन John Terry, मतलब उसने बोला भी है, I could go to war, I could die for Jose Mourinho. I know बोलना एक चीज है, but he did that on the pitch. 2007 का जो कार्डिफ में जो फाइनल था अगेंस्ट आर्सेनल, which we वन रॉबिन्स असिस्ट, ड्रॉगबा's गोल एंड टेरीज डाइव, जो एक वंडरफुल एक था ना, पुटिंग हिज बॉडी ऑन द लाइन, मतलब खून आ रहा था यार लिटरली पिच पर, एंड ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल. आई डोंट थिंक ही वाज इवन फिट इनफ टू सेलिब्रेट द ट्रॉफी. And that was cherry for you. जो पता नहीं, people might relate to Rudiger, Real Madrid fans in the house, जो किया था Rudiger ने Champions League में few months ago, and that was Terry doing back in 2007. But this was the moment. I think if it was the next year, and this was basically FA Cup, the new Wembley. द न्यू वेम्बली का पहला एफए कप बहुत ही बोरिंग मैच था, ये मैं बोलना चाहूंगा. एज मच एज हम जोसे मोरिन्यो क्रिटिसाइज करते हैं, one thing about Jose Mourinho that no one can forget, that he used to suck out the opposition proper, or tactically he was brilliant. Sir Alex ka side, ठीक है, Sir Alex ka side, he didn't allow Manchester United to play football. Simply put, it was 0-0, extra time था. All of a sudden, Joloby Mikel to Lampard, Dink to Drogba, and Drogba beating Van der Sar, 1-0 victory. New Wembley में first FA Cup champions, and it was Chelsea Football Club. All Jose Mourinho, I'm telling you, it was all Jose Mourinho. But this was basically the best part of Jose Mourinho. I think मेरे लिए that's what makes him the GOAT of Chelsea managers. Or yes, Thomas Tuchel भी, by the way, आज people might not remember, Aj was the day when Thomas Tuchel was appointed 2 years ago as well. So big up to Thomas Tuchel as well, not just for Chelsea but generally in management. बहुत ही बढ़िया manager है. Hopefully he does well in the future, and he will. I'm knowing that. But you all know that Jose Mourinho has done it in 2 spells, and that is what I'm saying. Came back in 2014, पहले लिटिल हॉर्स बोलकर थोड़ा सा बिल्डअप किया टीम को, लेकिन 2015 में भाई डिएगो कोस्टा केम इन एंड रेस्ट वाज हिस्ट्री. फैब्रिगास एज वेल, एक्स आर्सेनल लेजेंड, यार क्या बोलोगे. जैक याद रखिए, रॉबिन गोल वर्सेस न्यूकासल, भाई ब्रिलियंट. बाय द वे, बेस्ट 11 में आएंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रीम एज वेल एज ट्रांसफर्स इन द थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रीम, तो भूलना मत, उसमें हम और भी बात करेंगे एब्सोल्युटली. टाइगर बीच जैसे बोल रहे सब लोग, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, प्लीज लाइक द स्ट्रीम सर्टेनली इफ यू कैन शेयर. ब्रिलियंट. क्लिफोर्ड इन द हाउस, लेट्स टेक अ कपल ऑफ कमेंट्स यहाँ पर. लेट मी सी क्या बोल रहे हैं आप लोग. फॉर मी ग्रेटेस्ट सीएफसी प्लेयर एवर इज एडन हजार्ड. Talent wise, he was the best we ever had. I have not seen Zola played real time, so I cannot say. बिल्कुल. So Clifford, यहाँ पर again, I think I have discussed in the past as well. I think just purely based on talent, I would put Zola first, then Eden Hazard, absolutely. In fact, Ruud Gullit, again, I've not watched Ruud Gullit live, but people say that he was right up there. उनके बहुत सारे videos देखे मैंने, तो for me, Ruud Gullit is also right up there. Luca Vialli, as a मतलब एकदम बिंदास striker, was great, absolutely. Jimmy Floyd Hasselbank was brilliant. I'm saying talent wise, obviously Didier Drogba हम count नहीं करते, लेकिन Didier Drogba, Frank Lampard, people take for granted. Those two were really talented as well. But proper जो बोलते हैं ना, goosebumps वाला feeling जो देता है, for me Zola, Hazard and Robin, these three I think has to be there in the top 3 in my opinion of all time for Chelsea, that is. Listening to my Martin Tyler at weekends at bridge commentator shouting Drogba, what a goal. Yeah, बिल्कुल. We need some Dutch and Italian players back in our squad. We played a vital role. बिल्कुल फरहान, बहुत अच्छा बोला है फरहान ने. I think Ruud Gullit का नाम already लिया. Luca Vialli, the late Luca Vialli, भाई big up to him, absolutely. Di Matteo, people forget, yeah, Di Matteo. Ranieri as a coach, he was an Italian. Ancelotti was an Italian as a coach. भाई हमने बहुत सारे players, especially Italian or Dutch managers, हमने बहुत लिए हैं. But again, you cannot say Dutch and not talk about Guus Hiddink. Guus Hiddink was also a great manager for me, जो नहीं रहे for the long time in the first spell. First spell में वो prime में थे बिल्कुल. Yeah, Mudryk can reach there, by the way. Mudryk can reach there. जब मैंने बोला ना, जब Zola, Robin और Hazard का नाम लिया, I think Mudryk can reach there for me. Gary Cahill, हाँ, वो स्टार का रखता हूँ. When you talk about the best 11 of Chelsea, we'll give shoutouts, we'll give basically, मैं starting 11 भी करूंगा, substitutes भी करूंगा, ठीक है पुदिन, तो वो भी करेंगे absolutely. भाई, would you consider JT greatest ever defender to play for Mourinho? Okay, चलो. भाई Jack, यहाँ पर I think I might become a little bit emotional, I don't know, but for me,
Like John Terry has taught me a lot of things in life, bro. As in the guy is went through some shit, मतलब crazy amount of shit. सब जानते हैं क्या हुआ था जॉन टेरी और वेन ब्रिज. आई नो आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, मे बी जॉन टेरी वाज एट फॉल्ट, बट द गाय केम बैक, ही डिड व्हाट ही हैड टू डू ऑन द पिच, लीडर, कमांडिंग फोर्स. और लाइक ऐसे 2007 का अगर आपने देखा वो मैच लाइव, आप रो पड़ोगे यार. द वे द जॉन टेरी वेंट, भाई हिज नोज वाज ब्रोकन, हिज नोज वाज ब्रोकन, यस वो हॉस्पिटल में थे. एंड दैट इज जॉन टेरी फॉर मी. जॉन टेरी वाज ब्रिलियंट. मैं नॉट ओनली बोलूंगा ग्रेटेस्ट एवर डिफेंडर, एंड मैं अभी ऑलरेडी अर्ली आंसर दे रहा हूं द स्ट्रीम. For me, John Terry, without a shadow of a doubt, has to be the greatest ever Chelsea player. And there's not even someone who's close. Such में बोलो, John Terry, JT is. और मैंने again, I was lucky enough to get a response from him on Twitter, भाई. It was just a few months back. You know that उनका birthday था, मैंने ना किया था उनको wish, and he was humble enough to do that. And that is John Terry for you. He is a people's man. He is a proper fans captain, and that is what we miss today. JT has to be the number one. Of course, Drogba comes close. Of course, for me personally, Robin comes close. For me, a lot of them. Zola, जैसे मैंने बोला, Lampard, of course, बहुत सारे लोग बहुत close आते हैं. Luca Vialli और Ruud Gullit बहुत important थे चेल्सी के हिस्ट्री के लिए, to build that, foreign culture inside, England's Chelsea dressing room. और but JT has to be the guy. Desailly उनके थे भाई. Again, best 11 हम करेंगे, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में. Talent-wise, then Frank Lampard and Robin has to be there. No hit to Hazard. But again, Frank Lampard, there were some crazy goals he scored, some crazy passes, some crazy assists that people don't rate Frank Lampard for. I agree 100%. I think ये 7-8 players जो मैंने नाम लिया, they have to be there. Jose Mourinho, not one pundit in the television is from Chelsea. It's always someone from Liverpool or Manchester United. When I retire at 75 years old, I'll be a pundit so I can defend Chelsea on television. Amal Abraham, thanks for sharing that. I hope Mourinho doesn't lose his love for Chelsea. And abhi bhi bolte hain, he has his one of his houses in London, aaj tak. So there is something that you can imagine or hope. Is there any Diego Costa type player now? Answer is a big no. Maybe आप बोल सकते थे रूडिगर in defense थे last season, ठीक है, but there is no one like Diego Costa जो एकदम in the face of the opposition हो और wants to win. We don't have that player. We need that player big time. हाँ, लेकिन Diego Costa भी I think as much as people would not agree, we got rid of him at the right moment in my personal opinion. I don't think that was a mistake. बहुत लोग बोलते हैं हमने mistake की, but I think no. He was going down anyway. Yeah, I can hear you. Eden Hazard is something we have not replaced at all. Clifford बोल रहे हैं I never saw Robin during Chelsea days. हाँ, एक चीज मैं बोलता हूँ Clifford, एक स्टोरी है about Robin, and again best 11 में भी मैं बोलूंगा, लेकिन I think the guy was missing first few months जब आए थे. He was signed in the summer, लेकिन वो उनका पहला मैच शायद नवंबर में था, ठीक है, और जो पहले few months थे very missed. The doctor almost said कि नहीं, मतलब his injury is so bad that he might not ever play football. In fact, it is really bad that he has to be hospitalized for long and God can save him, kind of thing. उस moment तक चल गया था उसके injuries, But he came back पहले ही month में, and that was in 2004 मैं बोल रहा हूँ 2004 October November की बात है. He came पहले ही month में in the entire Premier League he stood out the player of the month, and that was the impact that he had. Impact player. Proper impact player. Impact player मैं बोलता हूँ the number one impact player the Chelsea's ever had is Ian Robin, and that is what I call him. But for me, difference क्या था Chelsea में? Chelsea में Ian Robin used to be a left winger more compared to a right winger. In between games, वो और Joe Cole और वो और Damon Duff interchange करते थे, लेकिन शुरू करते थे as a left winger and not as a right winger. For people who know that absolutely. Paul is the toughest one, it is, but that's how it is. It goes sometimes. बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं और देखता हूँ भाई. अगेन 2015 में देखिए हमने जीता. दिस स्क्वाड कहाँ है ये लोग सब भाई? आई कैन सी यंग जेरेमी बोगा. इज इट जेरेमी बोगा? लेफ्ट हैंड साइड में जेरेमी बोगा दिख रहा है मुझे. सब लोगों को पता है कहाँ है वो आजकल. एटलांटा में है. जेरेमी बोगा भी थे उस स्क्वाड में. ऑस्कर थे. ऑफ कोर्स Zuma, वेरी अंडररेटेड डिफेंडर इन हिज प्राइम बिफोर इंजरी जो हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट. फिलिपे लुइस ऑफ कोर्स थोड़ा अनलकी इन माय ओपिनियन. लॉइक रेमी पीछे नजर आ रहे. मेरे ख्याल से जो 3 ट्रांसफर्स व्हिच मेड द डिफरेंस फॉर अस टू विन दिस टाइटल वाज डिएगो कोस्टा. अगेन जोसे मोरिनो पिक्ड देम. ही हैंड पिक्ड देम. 2013-14 में हमने खेला था यूसीएल एंड वी मेट Atletico Madrid in the semis and they ousted us. You all remember that, right? और वहां पर कोस्टा और टेरी की लड़ाई हो गई थी
और कॉस्टा टेरी ने बोला था भाई दिस इज द मैन फॉर चेल्सी, जोसे मोरिन्यो लाइक जाकर ले बस। तो डिएगो कॉस्टा आए थे, सेस्क फैब्रिगास कन्विंस्ड हिम दैट यू कम टू चेल्सी आई विल मेक यू विन, एंड उसने प्रॉमिस डिलीवर किया। बट इवन बिफोर दैट 2014 जनवरी में आए थे नेमानिया माटिच, बहुत ही अंडररेटेड है बिकॉज पीपल फॉरगेट ही वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो लोग भूल जाते हैं कितना कंट्रीब्यूशन है चेल्सी में। मैटिच हैज टू बी द गाय। आई थिंक दीज आर द थ्री एसेंशियल साइनिंग जो हमने किया था 2015 में। बट इवन आप बोलोगे मे बी इवन डीडियर ड्रॉगबा एंड लॉइक रेमी, बिकॉज दे had given backup definitely to Diego Costa for sure, especially in dressing room. Didier Drogba coming back to Chelsea, not just Jose Mourinho. Yep, that's fair enough. Clifford, good point. People are saying we were on defensive side in the Mourinho, forgetting Lampard, Drogba, Robin, Crespo, Joe Cole killing it. Bilkul. I think when you like fast football, counter-attack football, when you like, so transition football from left to right, not from back to front, left to right, I think Chelsea were among the best in 2004, 5, 6, 7. Bilkul, in my opinion, I agree. 2015 में we started off that way, but then Jose Mourinho moved to basically a pragmatic style which worked, and we won after losing to Tottenham. I remember that. Putin people, John Terry for me is the best defender I followed. What a guy, he was fearless and the true warrior leadership. Absolutely. भाई Mourinho is a special one because उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया खुद ही एक तो ये रीजन आकाश, बैक इन 2005 क्या हुआ था, यहाँ पर कोट्स हम देखेंगे Mourinho के, बट बेसिकली क्या हुआ था जब वो आए थे 2004 में, सॉरी, पोर्टो, he won the UEFA Cup with Porto. I'm not sure if it was called the UEFA Cup then. Yeah, it was already called the UEFA Cup. Yes, it was not the Europa League. So UEFA Cup with Porto, and then he won the Champions League with Porto. तो भाई बैक टू बैक, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम द स्पेशल वन। एंड उन्होंने बीट किया था, बाय द वे, जो जिस साल वो पोर्टो को जिताए थे चैंपियंस लीग, चेल्सी शुड हैव वन द चैंपियंस लीग, ये भी बोलूंगा। अंडर रानियरी वी हैड बीटन द इनविंसिबल्स आर्सेनल साइड, ठीक है, इन द क्वार्टर फाइनल फॉर पीपल हु डोंट नो, बट वी लॉस्ट टू मोनाको, एंड ऑन द अदर हैंड पोर्टो बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज फैंटास्टिक फॉर हिम, एंड दैट वाज द मोमेंट। एंड फाइनल में तो भाई इट वाज ऑल Mourinho, एंड दैट वाज व्हाट इट इज, एंड हैप्पी बर्थडे टू हिम अगेन, एब्सोल्युटली। some of the matches, आपको कौन से मैचेस याद आते हैं? मतलब आई डोंट नो इफ, अगेन मैं थोड़ा सा चेल्सी के स्लाइड्स ही डाला हूं अभी के लिए, इवन इफ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, रियल मैड्रिड फैन, मे बी इवन स्पर्स फैन, मे बी रोमा फैन, आप लोग इंटर मिलान फैन, आप लोग प्लीज मुझे बोलिए in the chat section, which are those matches of Mourinho which stand out, which are those moments of Mourinho on the pitch, with his team being on the pitch, वो जो stand out करते हैं। I think this has to be the one. This was basically double-legged affair. It was Blackburn Rovers, और सब लोग बोलेंगे भाई Blackburn Rovers का क्या दिखा रहा है, जो लोग नहीं फॉलो किए थे अर्ली 2000s में। For me, that was basically, कैसे समझाऊं, मतलब Blackburn were the Stoke of early 2000s. सिंपली पुट, ठीक है, मतलब बहुत ही, और संडरलैंड, स्टोक्स, इट वाज नॉट इजी टू गो, बोलते ना लाइक इज इट इजी टू गो मिड वीक एंड प्ले ऑन अ रेनी नाइट, कोल्ड नाइट इन स्टोक। Blackburn Rovers was one of them in early 2000s, and Blackburn Rovers आप देख रहे हो नीचे, प्रॉपर फाइट हुआ था, we beat the Blackburn 1-0, especially in the game below। ऊपर में तो Gudjohnsen became a hero, absolutely one more unsung hero of Chelsea, but इसमें पेटर चेक सेव्ड अ पेनल्टी, जहां तक मुझे याद है, द वन बिलो जो आप देख रहे हो फोटो, और बहुत ही अच्छा गेम था। रॉबिन अगेन वाज अ हीरो इन दैट पर्टिकुलर गेम, एंड लैम्पार्ड भाई आप देख रहे हो द वे ही लव चेल्सी। मैकेलेले भाई इतना छोटा सा है, बीच में घुसेड़ के मार रहा है आप देखो यहाँ पर द एंड दैट वाज समथिंग दैट हम मिस करते चेल्सी में। हाँ, आई नो दिस इज नॉट समथिंग मैं रेकमेंड करता हूँ फॉर एनीवन प्लेइंग फुटबॉल, बट समवेयर डाउन द लाइन यू नीड दैट एज अ टीम, दैट टीम स्पिरिट। भाई मैं मेरे टीममेट के लिए मर मिटने को तैयार हूं, दैट इज व्हाट दैट चेल्सी टीम हैड, एंड दैट्स व्हाट जोसे मूरिन्हो ब्रॉट इट टू मी। बाय द वे, यहाँ पर पुतिन याद करते हुए, यस एब्सोल्युटली 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट था इनका योगदान आस्पी एज लेफ्ट बैक। अगेन फिलिपे लुइस वाज kind of unlucky, I would say. Costa was not a mistake, but letting go of Giroud was a mistake. Yeah, I agree 100%. Neeraj यहाँ पे 100%. Ivanovic और Aspi for me, yeah, ये मैं बेस्ट 11 में करने आने वाला हूँ, and I'll be talking about that absolutely. Okay, no problem. आप अभी भी देख सकते हो, I think you can watch the entire season का highlights. मुझे याद है यहाँ पर we had watched I think last year sometime, and we did the stream on that also. I remember Guruji was in the house, and we did speak about it with Chirag Guruji, with Baba, and as well as Karan Bhai once. तो हमने दो stream किया था उसमें, and we were celebrating Roman era उस समय, and that's what the difference was. But anyone remembers this game?
एनीवन भाई, हाइलाइट्स भी देख लो तो देख लो, मैं इसलिए मैं हाईलाइट करूँ, बट दीज आर सर्टेन गेम्स प्रॉपर, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एड्रेनलिन रश वाज क्रेजी भाई। दिस वाज बेसिकली, दिस इज नॉट द गेम जहां पर माइकल एसियन ने ब्रिलियंट गोल मारा था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द गेम जहां पर हमने 2-2 लिया था, बट दिस वाज अ गोल। सो क्या हुआ था, दिस वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन हाइबरी में वी वेंट एंड गॉट अ ड्रॉप, इफ आई रिमेंबर राइट। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इवन इन द चैनल, बट डिफरेंस वाज आर्सेनल, जैसे मैंने बोला, आफ्टर वी काइंड ऑफ बीट देम इन द चैंपियंस लीग, वो थी इनविंसिबल्स आर्सेनल लीग में। आर्सेनल हैड अ नंबर ओवर चेल्सी फॉर मेनी सीजंस, मेनी सीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड से फिर भी चेल्सी यूज्ड टू डू वेल, ठीक है, वी यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, लेकिन आर्सेनल, थियरी ऑनरी इन पर्टिकुलर, हैड अ मेजर थिंग अगेंस्ट चेल्सी। जैसे सर्जियो अगुएरो लेटर ऑन हैड अ थिंग अगेंस्ट चेल्सी, वो होता है कुछ स्ट्राइकर्स का। आर्सेनल जनरली बहुत बीट करती थी चेल्सी को, एंड देन वी चेंज्ड इट, and this was one of the moments where John Terry scored. मुझे याद है तो Gudjonsen scored another goal as well, and it was basically a draw match, and this was one of the pivotal points जहां पर मुझे लगा था भाई this is the time Chelsea will go on to win the league, absolutely. And this game भाई, बारसा fans, अगर आपने ये गेम नहीं देखा है ना अंडर जोसे मोरिनियो, लाइक वन ऑफ दी जोसे मोरिनियोज चैंपियंस लीग मोमेंट्स एवर, ये मैं बोल रहा हूं, डिस्पाइट हिम विनिंग चैंपियंस लीग विद पोर्टो और इंटर मिलान। यस, इंटर मिलान से ही बीट बारसा, दैट वाज आल्सो वेरी बिग डील, सब लोग याद होगा, दैट वाज अ प्राइम बारसा, बट द प्राइम बारसा स्टार्टेड हियर। रोनाल्डिनियो एब्सोल्युटली गोट लेवल फुटबॉल खेल रहा था, गोट लेवल फुटबॉल। और फॉर पीपल हु आर वंडरिंग, जो लोग लाइव नहीं देखे, रॉबिन डफ को इस मैच में देखिए भाई, रॉबिन डफ एंड जो कोल, मतलब दे वर क्रेजीली गुड, crazily good. Robin, Duff, Joe Cole, Gudjonsen, Drogba. भाई, we had substitutes coming on, changing the game even from the beginning. हमने बहुत ही अटैक किया था, proper attacking football. You say Jose Mourinho is defensive. Watch this game. This was 2004-5, Barcelona and Chelsea. और Barcelona, what a performance, brilliant performance. Ronaldinho, one of the goals of all time in Champions League, मैं बोलता हूँ, against Petr Cech. But John Terry का moment आप देख रहे हो धीरे से, आज के वीआर के दिनों में ये भी हो सकता है दिस गोल माइट हैव नॉट अलाउड, ये भी सच में बोलता हूं, बिकॉज कार्वालियो, आप देखो विक्टर वाइल्डर्स को थोड़ा धक्का मार रहे हैं, एंड यू ऑल नो वी आर इन चेल्सी व्हाट हैपेंस। पता नहीं आप लोग को याद है कि दिस वाज द चेंजिंग मोमेंट इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री ऑफ चेल्सी, मैं तो बोलता हूँ। मैं और कमेंट लेने वाला हूँ बीच बीच में, बाय द वे हम वापस से आने वाले ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रीम, व्हिच इज गोइंग टू बी द बेस्ट 11 ऑफ चेल्सी एवर, जो मैंने देखा इन द लास्ट 20-25 सालों में, प्लस वी आर गोइंग टू कम टू ट्रांसफर्स चेल्सी एंड नॉट जस्ट दैट, इवन अदर प्रीमियर लीग साइड्स। तो सब लोग, फर्स्टली आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन हियर, hit that like button, let's get to 150 likes right now, we can easily get there, absolutely. तो यहाँ पर मैं और देखना, Fabregas was another level, absolutely पृथ्वी, maybe he gets in the best 11 or not, let's see. Courtois great in Chelsea, लेकिन the way he left Chelsea somewhere down the line, you know, उसने कर दिया issue with Chelsea fans, you all know that, but कोई नहीं, we'll talk about that goalkeeper as well. Same for Mata also. Mata was amazing when we had an aging squad, but he also moved to United, so same story as Matic, kind of. लेकिन Mata, मैं बोलूंगा, was even better. The difference was Matic was a game changer. Mata was brilliant, awesome, one of the कैम्स दैट हैज प्लेड फॉर चेल्सी एवर, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, वो लेफ्ट विंग राइट विंग से शुरू करते थे, लेकिन कैम में ज्यादा खेलते थे इन द गेम, पीपल डोंट नो इट, बट फॉर मी, मतलब व्हाट सुपर्ब फ्री किक्स में बहुत अंडररेटेड थे, बट द डिफरेंस वाज, आई नो ही वेंट ऑन टू काइंड ऑफ विन दैट कॉर्नर, जो हमने जिससे इक्वलाइज किया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, एंड वी वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग इन 2012, दैट्स वन माटा, बट Matic was a game changer in terms of us winning the league again. I genuinely believe that. When was the last time he signed a DM? If you know, you know. Bilkul. Crazy. It's crazy long, right? Bilkul, absolutely. Okay. Nice one. Okay. Also, Carvalho. Damn, the Chelsea history is full of character players. I really get emotional whenever I see all those legends and reels. बिल्कुल भाई, अगर कोई अगेन ये वाला मैच जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, check out. It was, I think, Chelsea 4, Barcelona 2. Don't miss to watch this match. अगर किसी ने नहीं देखा है ना मैच, I am telling you, watch this match proper as though it's a live match. You will love it. Absolutely love it. Crazy. मतलब सैमुअल एटू भी थे यार, हम भूल रहे उस समय। या पुदिन हम आएंगे, उस पर भी आएंगे एब्सोल्युटली। चलो मैं और दिखाता हूं आप लोगों को क्या है पिटारे में। और इट कैन एनीवन फॉरगेट दिस मोमेंट? कैन एनीवन फॉरगेट दिस मोमेंट? लिवरपूल फैन, सॉरी ब्रो, बट यू ऑल नो दैट
भाई दिस वाज, आई नो दैट पीपल विल से दैट नहीं, दे लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस, 2013-14 की बात है, एंड चेल्सी वाज अ लिटिल हॉर्स, चेल्सी को भी ट्राई करना चाहिए था मेरे ख्याल से टाइटल के लिए. यस, वी लॉस्ट पेनल्टी टू संडरलैंड, उसके कारण द इक्वलाइज्ड अंडर गस्ट पोएट, जो थे एक चेल्सी मैनेजर, चेल्सी एक्स प्लेयर बाय द वे, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर हैविंग सेड दैट. लेकिन लिवरपूल के साथ मैच था एंड इट वाज एनफील्ड. भाई थॉमस कैलास प्लेड, विलियन ने मारा था गोल, असिस्ट Torres, an ex-Liverpool guy, but that was the second goal. First goal, everyone remembers it was Demba Ba, and Demba Ba, Steven Gerrard and slip. No one can forget, and this was the moment. Look at Jose Mourinho. भाई मैं बॉल नहीं देने वाला, बॉल छीन लो मेरे से, मैं बॉल नहीं देने वाला. And that is what shithousery. Some people hate it. I love it. I love it. Absolutely love it. Pedro, yeah, we have to remember him as well when we talk about best 11. As a United fan since 2002, I dreaded players like Drogba and Henry, even though United have fallen from glory, but there has been no worthy opponent whom I fear more than Drogba. ZRA, I respect that comment absolutely, 100%. Chelsea Lions team in the house, thanks to join here, yeah, bilkul. Jose Mourinho was an absolute legend. His straightforward press conference in the Premier League is missed a lot. Him and मैं बोलता हूँ even Louis Van Gaal, मैं बोलता हूँ दोनों, I miss them a lot in Premier League. Chelsea 2-1 was United. Joko and Drogba scoring were my best matches. Okay, that's a good pick definitely. यार मुझे थोड़ा जल्दी पैदा होना था भाई. कोई नहीं, अभी भी मिलता है आपको, आप यूट्यूब में चेक करिए, आपको मिलता है, बहुत सारे मैचेस मिलते हैं, डोंट मिस इट आउट. हाँ, लेकिन वो फील जब यू वेटिंग फॉर अ लाइव मैच, यू डोंट नो व्हाट द रिजल्ट इज. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. Ronaldinho color, definitely that is not something that I can ever forget. For me, one of the GOAT level players, absolutely. Wow, Clifford says he was above even Sir Alex Ferguson. यूरोप में या मे बी क्लिफर्ड, आई हियर यू, लेकिन प्रीमियर लीग में डेफिनेटली नॉट यार. मच लव टू यू ब्रो. रिमेंबर ट्रैशिंग बार्सा, यूनाइटेड, आर्सेनल, वी डिडंट गेट द क्रेडिट वी डिजर्व. बिल्कुल, वी यूज्ड टू ट्रैश देम एंड दैट्स द थिंग. इवन सिटी ब्रो, सिटी वाज नथिंग टू बी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिटी. एब्सोल्युटली. LM10, थैंक्स फॉर सेइंग दैट. भाई सब लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एब्सोल्युटली, just the press of a button. Consider doing that. And yes, we are very close to 7K. And as Manav is saying as well, Manav, big up bro, City की बात किया Manav, but कोई नहीं, but you will relate absolutely. Manav knows his stuff यहाँ पर. But which was the best goal that Chelsea has ever scored under Jose Mourinho? Which was the best goal? Again, matches हम बात कर लिए, moments हम बात कर लिए हैं. Which was the absolute best goal? मतलब this goal, does anyone remember which was the goal? मैं कौन सा बात कर रहा हूँ? ये पहला मैच था, बर्नली के साथ था, 2014-15, द सेकेंड सीजन अंडर द सेकेंड स्टिंट ऑफ जोसे मोरिन्यो एट चेल्सी. और हम जा रहे थे टाइटल, वो दिख रहा था इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर वी वेंट डाउन 1-0 टू बर्नली. इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स we came back. Bhai, Diego Costa with a great goal, but this was the goal I'm talking about. What a beautiful goal. But this goal in history of Premier League doesn't get the credit what it deserves. Bhai, Fabregas is magic. हम क्यों बोलते हैं? जो Fabregas ने किया था, and Andre Schürrle, bhai, one of the underrated players of that particular season. I know he left then in the end. I think at that point it was a mistake. हमने लाया था Cuadrado को, but Schürrle, he scored some very important goals, and it was one of those goals which kind of took us momentum. यहाँ से हमें मिला. Burnley in the second half we were crazily good. बिल्कुल हम शाउट आउट बहुत देने वाले हैं क्लिफोर्ड. स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जोसे मोरिन्यो के मोमेंट्स और गोल्स और इवन कोट्स हम बात कर रहे हैं, बट वी विल कम टू द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ चेल्सी जो हमने देखा है. एब्सोल्युटली. थैंक यू टाइगर बीस्ट अगेन. Or is it this match? Anyone remember this match? Like one of people saying that Jose Mourinho played boring football. Has anyone watched this match? 2015 की बात है वापस, ठीक है. ये है बेसिकली, नहीं 2014 की बात है, 2014-15, 2014 की बात है. अर्ली ऑन इन द सीजन इट वाज अ 5-3 score line, bro. It was a crazy match. I think Samuel Eto'o was in Everton at this point in time. पिछले साल Samuel Eto'o was in Chelsea. Diego Costa replaced him. We all know that. And Diego Costa, Branislav Ivanovic was absolutely going all guns blazing, bhai. मतलब this is a high octane वाला match था, proper high octane match for a Premier League fan. If you have not watched this match, in fact, मैं तो बोलना चाहूंगा, Everton के साथ over the years we've had some of the best matches. Some of them have been 1-0. मुझे याद है अंडर एंटोनियो कॉन्टे हमने जीता था 4-0. That was one of the best under
say Antonio Conte, I would say, and generally for Chelsea, we played some scintillating football, Hazard at his peak. लेकिन इस मैच में with Jose Mourinho being at the helm, we proved it. Burnley नहीं, Everton भी, we can come back from behind and do so well. 5-3. Ramirez, Ivanovic, Diego Costa, what a game. And Jose Mourinho at his absolute counter-attacking best. Again, Real Madrid fans उससे relate करेंगे क्योंकि Real Madrid of Jose Mourinho football was totally counter-attacking. आप लोग जानते हो बहुत मजा आता था देखने में. Getting Willian was one of the best decisions Mourinho made. Absolutely. Willian जो balance देता था Hazard को, I think people don't realize that and didn't realize even then. And absolutely. David Luiz was also amazing, especially free kicks, बिल्कुल. लेकिन only thing मैं बोलूंगा, Jose Mourinho David Luiz की 36 की आंकड़ा थी. So I don't think they went along well. That I must definitely say. Gaurav will come to the transfer news towards the end of the stream, so please hold on भाई. हम absolutely आएंगे. Drogba banger, भाई एक एवर्टन के साथ अच्छा याद दिला लूसी ने. भाई everyone जिन्होंने देखा नहीं है ना 2003, 4, 5, 6, 7 प्रीमियर लीग, उस समय एक मैच था एवर्टन के साथ में, अगेन इट वाज कम फ्रॉम बिहाइंड, और वो थी चेल्सी भाई उस समय. वी न्यू पीपल लाइक ड्रॉगबा, बैलक, just attacking भाई, midfield से एक शॉट मारते थे गोल, and that is what happened. Drogba banger against Everton 3-2 we came back. Ballack and Drogba absolute brilliant in that game along with Lampard. याद रखिए, चेक करिए, Chelsea 3 Everton 2, do check it out. I think it was an away game वहां भी. It was absolutely brilliant. Everton के साथ we have had some of the best games सच में in that era. Even Liverpool I would say. And this game Arsenal fans भाई congratulations in advance अगर आप लोग जीतने वाले हो प्रीमियर लीग इस सीजन. But if anyone knows, what was this game about? This game was about Arsene Wenger's 1000th game. And with all due respect, Arsene Wenger भी है one of the goats. लेकिन मैं बोलना चाहूंगा after Sir Alex Ferguson, I will keep Jose Mourinho still, because Pep has still not won a Champions League or something like that, with City. I know Jose Mourinho maybe नहीं जीता था, लेकिन Jose Mourinho I think reached more knockout phase Chelsea के साथ में. तो Jose Pep मैं साथ में रखूंगा, फिर रखूंगा Arsene Wenger. Because Arsene Wenger, that went downhill somewhere down the line. I think this was a moment. People, 6 goals मारे थे हमने against Arsenal. 6 goals against Arsenal. Andre Schürrle, brilliant. Samuel Eto'o, brilliant. Mo Salah scored as a substitute. अंकुश, इसकी बात हम करेंगे जब हम बात करेंगे about the best 11 of Chelsea ever. Frank Lampard goal versus Bayern, or Robin goes Newcastle, no debate. Brilliant. Frank Lampard goal versus Bayern Munich. Brilliant. Frank Lampard goal against Barcelona. Jack, I don't know if you remember. Frank Lampard in Champions League. In Premier League, still मैं बोलूंगा that I think the Schürrle goal against Burnley was something else. Robin was absolutely brilliant. You know that मैं तो Robin stan हूं. लेकिन Frank Lampard against Barcelona in the Champions League मैं बोलता हूं. That was absolutely brilliant. By Cross, nice to see you. Again, like कर देना, subscribe करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया अपने दोनों चैनल्स में. Who am I का सेमीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले भी. As soon as all the 4 semi-finalists are available हम करेंगे. As things stand, एक जन available नहीं है. He's preparing for something, so hopefully we'll have that person available. So hopefully when this is available, we'll do it next month. Absolutely. 6-3 Chelsea, 6-3 against Everton. 6-3 था, not even 5-3. Chalo, I got it wrong. Ajinkya, thanks a lot. As well as Jack. John Obi Ramirez, so underrated. बिल्कुल. भाई एक और गेम था, I think was it under Jose? I don't know. We had like a crazy result against Spurs. यार, it was one of those Boxing Day 4-all. क्रेजी गेम वो भी था, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर विद जोसे. बट आ जाते हैं भाई कुछ फेमस कोट्स ऑफ जोसे मोरिन्यो, देन विल कम टू द बेस्ट 11. ठीक है, और उसमें आई नीड ऑल योर सपोर्ट. मैं रीड करूंगा भाई, टंग एंड चीक, यू नो दैट. आई हैव टॉप प्लेयर्स एंड आई एम सॉरी, वी हैव अ टॉप मैनेजर. दैट्स जोसे मोरिन्यो हिमसेल्फ, बाय द वे. प्लीज डू नॉट कॉल मी एरोगेंट, बिकॉज व्हाट आई से इज ट्रू. I am not European champion. I am not one out of the bottle. I think I am a special one. This was the first press conference in England. The guy had the audacity to say that. भाई आया था 2 यूरोपियन ट्रॉफीज के बाद में, winning with Porto. I know, very good Porto side, but nowhere close to the top sides of the world as well. और भाई देना पड़ेगा उसको इस एटीट्यूड, ये इतना कॉन्फिडेंस. There's a very thin line between arrogance and confidence. Now, this was where it was. Zlatan और Jose इसलिए बहुत अच्छे दोस्त थे, बिकॉज आपको पता है क्या लाते दोनों. इन द सुपरमार्केट, ये मेरे ख्याल से 2013 की बात है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इन द सुपरमार्केट यू हैव क्लास 1, 2 और क्लास 3 एग्स एंड सम आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स. नहीं, ये है अर्ली ऑन इन द ट्रांसफर विंडो. ओके, दिस इज 2005.
and some give you better omelets. So when the class 1 eggs are in Waitrose and you cannot go there, you have a problem. By classic Jose quotes, these are absolutely. Just while nice to see as well. Gibbs getting sent off, being misunderstood. Bilkul, bilkul. That's a great one. Again, the referee helped there. Mourinho destroying Wenger was satisfying. It was for sure. God level shithousery, 100%. फिर क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखते हैं. चलो और देखते हैं. नेक्स्ट कोट देखते हैं क्या है भाई. It's not important how we play. Again, बहुत लोग बोल रहे हैं भाई we play shit football under Jose Mourinho. इतने सालों तक we are like carefree. If you have a Ferrari and have a small car, to beat you in a race, I have to break your wheel or put sugar in your tank. Is it not real? वही आजकल के basically, you know, lot of say managers who want to play good football forget playing against the bigger sides. Or if you're not the favorite, you have to change your tactic. Horses for courses करना पड़ता है. And that's why tactically, in his prime, अभी नहीं बोल रहा हूँ, in his prime, he was absolutely, I think, one of the best managers ever in his prime. Tactically, he was brilliant. He was one of the first in that era जो उन्होंने करके दिखाया against a very good Barcelona side. He मैं दिखाया था, you know, in the Champions League, he did that, right? What ये quote है, it means he actually definitely did what he spoke. अच्छा, यहाँ पर everybody was waiting for Chelsea not to win every game, and one day when we lost, there will be a holiday in the country, but we are ready for that. Carefree Chelsea, bhai. Chelsea fans will relate to this absolutely. यहाँ पर अजिंक्य बोल रहे 4-all in the League Cup where we went to White Hart Lane and Sheva scored a banger. Was that it? No. So basically that was a brilliant game as well, Ajinkya. लेकिन Sheva scored an absolute banger. वहां पर तो हमने जीता था, लेकिन 4-all था मेरे ख्याल से. This was during the Christmas time in the Premier League as well. Okay. Also, yeah, that's a correct one. You know, Zlatan was definitely having that with Jose. मतलब दोनों का चलता था यार. They went along really well. Yep, बिल्कुल यार. ये this तो we cannot forget it. We can never forget it. लेकिन again under Jose Mourinho, what we had against Barcelona, that was crazily good as well. I am Jose Mourinho. चलो भाई. जैसे डेरियन बोल रहे, that's what it is. Chelsea fans will know that. Just while a good one. The title race is between two horses and a little horse. This was basically 2013 की बात है. When he came back and they said Jose Mourinho has come back. Already Manchester United were doing very well. There was Man City coming up crazily good, and of course, you know, Arsenal or some extent Spurs भी उस समय अच्छा करी थी. लेकिन इन्होंने बोला that we are a little horse that needs milk and needs to learn how to jump. और उन्होंने कर दिखाया. The following season we won the Premier League, and that's what he meant, what he said. This one. Oh man, sorry for my laughter, bro. Arsenal fans, you know what I'm talking about. Am I afraid of failure? He is a specialist in failure, and you all know who he is. With all due respect, he was a legend of football. I'm not going to say no. I am not. So, if one supposes he's right and I'm afraid of failure, it's because I don't fail many times. So maybe he's right. I'm not used to failing. But the reality is he's a special because 8 years without a piece of silverware, that's failure. And again, Arsenal fans, big up to you. All the best for winning the Premier League as well. Hopefully for your sake you win it. लेकिन भाई, even that मैं बोलूंगा 20 साल हो गए आर्सेनल को. 20 साल हो गए प्रीमियर लीग जीते हुए. And that is something that we all should remember. I know हमें भी 5 साल हो गए. But Jose Mourinho really lived it. He really lived it, absolutely. भाई लेकिन Jose Mourinho की हम बहुत बात कर चुके हैं. भाई let us all go to, I know you all जो भी late join कर रहे stream, do not forget to like the stream, share करिए, subscribe करिए. There are 3 parts to the stream जैसे मैंने शुरू किया था. The second part which is going to start now. This is going to be an all-time 11. So यहाँ पर मैं choose करूंगा अपना all-time 11. But we will be giving shout out for every position, and हर एक position में I will ask your opinion as well. What do you think your best was? Finally I might choose mine, but I would love to know yours. And this might be a neutral who might be a Premier League fan. आप अपना भी बता सकते हो हर एक position से. तो हमने करना है एक all time 11 और all time बोल रहा हूँ. तो again मैंने शुरू किया चेल्सी को देखना in the Champions League from 1999 and in the Premier League from 2002. And I'm talking about हर एक मैच वाला सीन बोल रहा हूँ. चैंपियंस लीग 1999 और प्रीमियर लीग 2002. तो उस हिसाब से मैं करूंगा. तो व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन आईज लाइव मोर और लेस. ठीक है, तो ऑल टाइम 11 हम शुरू कर रहे हैं. सब लोग, एवरीवन रेडी?
फॉर्मेशन एनीवन? तो पहला चेल्सी हम लोग खेलते थे अंडर रानियरी, तो हम चेंज करते थे लिटरली एवरी वीक. देन अंडर लुका वियाली इट यूज्ड टू बी वेरी अटैकिंग, बट अंडर जोजे मोरिन्यो इट यूज्ड टू बी बेसिकली अ 4-3-3. प्राइम चेल्सी जो बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट जोजे एरा था, 4-4-2 डायमंड भी होता था. देन अंडर एंचेलोटी अगेन वी केम देयर. यहाँ पर खाली जोजे मोरिन्यो का नहीं, विल बी इंक्लूडिंग ऑल चेल्सी टिल डेट, दैट इज. देन ऑफ कोर्स सेकंड जोजे मोरिन्यो स्टिंट हम आए थे 4-2-3-1. Then we moved to a 3 the back. Lampard के under we again went 4-3-3. Then again Conte के under 3 the back थे, by the way, if you all remember. Then again we went 3 the back under Tuchel. But अभी again 4 the back. I would say, I don't know, आप लोग का बेस्ट चेल्सी एवर कौन सा है जो मैंने देखा है? मैंने दो चेल्सी मैं बोलूंगा. एक है कार्लो एंचेलोटी का चेल्सी 4-4-2 विद अ डायमंड इन बिटवीन, और जोजे मोरिन्यो का 4-3-3. दिस इज द बेस्ट चेल्सी. तो मैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स जोजे's बर्थडे, लेट्स गो विद 4-3-3. क्या बोलते हो आप लोग? अग्रीड एवरीवन? तो लेट्स गो विद 4-3-3. तो 4-3-3 हम करेंगे पिक यहां पर. अगेन लास्ट 24-25 साल में जितना भी देखा है मैंने चेल्सी को, एंड ऑफ कोर्स यू गाइस कैन इवन पुट इन योर कमेंट्स. तो हम एज ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम द गोलकीपर एंड विल गिव शाउट आउट्स एज वेल पीपल. यहाँ पर अगर मैं कुछ नाम भूल जाओ टू गिव देम ऑल द प्रेज दैट दे डिजर्व, लेट मी रिमाइंड यू और यू रिमाइंड मी, ईदर वेज. ठीक है, तो विल गो देयर. तो हम जा रहे हैं 4-3-3 जैसे गौरव और एलिम्टन और ओवरलॉर्ड बोल रहे हैं. ठीक है, तो वी आर गोइंग विद दैट एब्सोल्युटली, एज वेल एज चलो पुदिन भी बोल रहे हैं 4-4-3. नहीं 4-3-3 इज बेटर ब्रो, यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवे, तो भाई गोलकीपर, इज देयर इवन अ डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए गोलकीपर में, एनीवन. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग करेंगे, एक बैकअप करेंगे. ठीक है, तो विल पिक अ स्क्वाड ऑफ 22. हाउ इज दैट? क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हुए लास्ट 22 ईयर्स में, इतने सारे प्लेयर्स हुए, तो एटलीस्ट 22 प्लेयर्स तो पिक करते हैं ना चेल्सी के. तो भाई 22 प्लेयर्स पिक करेंगे, लेकिन एक स्टार्टर विच विल द मेन पिक और एक बैकअप. ऑल टाइम चेल्सी 11 अंडर, हाँ ये हमने कर लिया मानव, इसलिए आई वाज थिंकिंग आई विल डू दैट. बट आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर फ्यू मंथ्स अगो, आई थिंक गुरुजी वाज देयर, हमने उस समय एक्चुअली ये पिक किया था. वी डिड अ स्ट्रीम विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल. तो यहाँ पर क्योंकि मैंने कभी भी ऑल टाइम चेल्सी जो नहीं पिक किया है मेरा, जो मैंने देखा है इन अ प्रॉपर स्ट्रीम, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट अलोंग विद यू गाइस. ठीक है, तो भाई सब लोग whoever might be associated with Chelsea, भाई उनको तो पता ही है दैट चेक इज एन ऑब्वियस भाई. लेकिन सब लोग बोलेंगे मे बी कौन होगा बैकअप गोलकीपर कौन होगा चेल्सी, विच इज द बेस्ट गोलकीपर आफ्टर पेटर चेक इन द लास्ट 24-25 years. मतलब मेसी लव्ड नेट मेकिंग कोर्टवा, तो कोर्टवा यू वुड आर्ग्यू दैट इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स उसने जीता है प्रीमियर लीग विद चेल्सी, सो व्हाई नॉट कोर्टवा. बट आई थिंक यहाँ पर विदाउट एनी shout, I will give this Carlo Cudicini. For me, one of the most underrated goalkeepers in the Premier League period, one of the most underrated goalkeepers in Italian football period, in English football period. Like Carlo Cudicini was an absolutely brilliant shot stopper. लेकिन कार्लो कोडिचिनी को डेफिनेटली है शाउट आउट. कोर्टवा, एज मच एज चेल्सी फैंस वुड से दिस, शाउट आउट देना पड़ेगा बिकॉज बंदे ने एक्चुअली जीता है प्रीमियर लीग विद चेल्सी. हाँ यस आई नो, लेकिन कोर्टवा क्वालिटी वाइज इज बेटर. लेकिन यहाँ पर अगेन रिमेंबर आई एम पिकिंग माई चेल्सी स्क्वाड. यहाँ पर the one that I related more, the one I felt was better in his prime, I am going with that person as well. Willy Caballero, come on Manav. Mendy deserves a shout out, yeah, come on. Champions League winning goalkeeper, Club World Cup winning goalkeeper, why not? Deserves a shout out 100%. Bonetti, yes, but Bonetti को मैंने देखा नहीं. Again, remember Gaurav, we are doing only last 24-25 years में जो मैंने देखा at least. और यहाँ कोई भी चार्ट में जो Bonetti and others को देखा, please give me a shout out. ठीक है, कुडिचिनी has to be the best backup. केपा को shout out दे सकते हैं, but again केपा ने इतना जीता नहीं है being a main guy. Club World Cup you can argue that's केपा, yeah, why not? Super Cup as well केपा, तो चलो shout out दे देते हैं. But जैसे माना बोल रहे भाई, shout out देने से पहले let's get to 150 likes right now. Come on. Actually 200 likes होने चाहिए, but 150 likes कम से कम कर लो यार. Come on. Czech was never beaten by Messi. बिल्कुल. तो भाई let's go with कुडिचिनी. For me, I know Spurs के लिए भी खेला है उन्होंने. For people who might not know, but Cudicini absolutely has to be there in my opinion as one of the shoutouts for sure. मतलब the top shoutout after Petr Cech, definitely. Mendy, again he lost his win, तो Mendy होते. Hilario, अरे भाई अंकल शर्मा नाउस, क्या हाल है भाई अंकल शर्मा, nice to see you. भाई Hilario, by the way people, definitely why not, as in Ross Turnbull,
people will say. Ross Turnbull थे भाई Champions League के पास. I think Hilario ने खेला. I think he had a really very good match against Barcelona, Hilario. But come on, Hilario in terms of the staff, maybe he's been very helpful. But come on, nowhere close to Kudichiri or even Koto or Mendy, to be honest. Even Kepa, right? Begovic, yaar, probably the worst period of Chelsea with yaar Begovic, to be honest, in the last decade. But हाँ, भाई एक second. Let me ask. सबसे पहले, there are 100 people watching. There are 100 people watching. Can we have 150 likes? It's just a like button. Come on. You are getting to know a lot of history. You're getting to know a lot of current as well, because हम बात करने वाले हैं current 11, all time 11, as well as transfers के बारे में. तो भाई let us have 150 likes. How is it possible? 83 likes on the channel. Bhai, come on. Bhai, everyone watching, can you all help me with a like button? Come on, it's just a like button. Or if you're not subscribed to this channel, consider subscribing. It's a fan channel for all to see. Yes, we alternate kabhi Hindi, kabhi English. Zyadatar Hindi, yes, but we do a lot of English content as well. Yes, Zyadatar Chelsea, but we do a lot of other clubs content. We cover all top 5 leagues. So, bhai, please consider liking the stream. सबसे पहले लाइक कर लीजिए. ज्यादा लाइक्स होंगे तो भाई बाकी लोग को पता चलेगा हम लोग लाइव है. एंड इफ यू कैन सब्सक्राइब, ब्रिलियंट. यहाँ पर टारगेट है, बहुत ही छोटा सा टारगेट है. 150 लाइक्स इज ऑल आई एम आस्किंग. कम ऑन, लेट्स गेट टू 150 लाइक्स राइट नाउ. होपफुली यू गाइस कैन हेल्प मी आउट देयर. जल्दी से बढ़ा दो बस सब लोग जो भी लाइक नहीं किए. कम ऑन, जस्ट प्रेस ऑफ बटन, डजंट टेक अ बक इवन टू सब्सक्राइब. Kepa doesn't deserve mention. No, Darshan, he wouldn't have deserved mention after what he did against Manchester City. जो किया था उसने कैराबाओ कप के फाइनल में. सारी को बोला था मैं नहीं आ रहा हूँ, बट इट वाज क्लियर्ड आउट. बट इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर इन चेल्सी, भाई उसने जीता है हमें पेनल्टी शूट आउट अगेंस्ट विलारियल टू विन द सुपर कप. He has got us basically our first club World Cup. I would like to say that as well. Definitely, he did great in semis, if I remember right. Absolutely. But as Darren Pudin is saying, by everyone has hopefully liked the stream. Come on, 150 likes for Mourinho, for EPL, for Chelsea. Absolutely 100% बनता है यार. उतना तो बनता ही है. चलो, let's go to left back. एक second. Time out कौन दे रहा है भाई? What is the need for time out? If there is something to be done with time out, do let me know who's giving time out and why. Before giving timeout, mods, I would like to ask you, why are you giving timeout? And again, people are giving timeout. Do let me know who's giving timeout. But hopefully, if you are giving timeout to someone, it is for something that they deserve it. If that's the case, please let me know before that. Yeah, it's a fan channel for all to see. Yes, I know we don't take hate. That's a very thin line. लेकिन banter हम लेंगे यार, absolutely लेंगे. तो थोड़ा सा view दो. यहाँ पर देखें. My first choice back four: Ashley Cole, John Terry, Ricardo Carvalho, Branislav, Ivanovic. Okay, interesting. चलो बैक फोर में आ जाते हैं भाई. एवरीवन, लेफ्ट बैक, द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक टू एवर ग्रेस द प्रीमियर लीग. Is there even a doubt? Is there even a, जैसे Petr Cech, obviously one would argue even he's in that reckoning for goalkeepers. By greatest left back that Premier League has ever seen, in my personal opinion, and that's got to be Ashley Cole. Come on, Ashley Cole has got to be there. लेकिन लेफ्ट बैक्स, बहुत सारे लेफ्ट बैक्स अच्छे हुए हैं चेल्सी के लिए. एनीवन लेट मी नो. और किसको सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक कौन होगा आपका? अगेन, इफ आई हैव टू टेल यू, ग्रैम लेसो. आई डोंट नो किन लोगों को पता है. लेसो वाज वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ चेल्सी एवर. ग्रैम लेसो, व्हाट अ लेफ्ट बैक ब्रो. अगर किसी को नहीं मालूम है ग्रैम लेसो का करियर क्या था, उनकी जो प्लेइंग स्टाइल की क्या थी, जस्ट गूगल ग्रैम लेसो चेल्सी, यू विल गेट टू नो. द गाय वाज इमेंस. Graham Lesser was brilliant. Anyone knows Celestine Babayaro, the legend? Celestine Babayaro. For people who don't know, भाई सबसे पहले जब जोजे आए थे अंडर Ranieri, he was a main left back. Celestine Babayaro. Alonso, shout out, मैं देना चाहूंगा 100%. But is he your second choice in all-time Chelsea in the last 24 years? No, I won't think so. Backup, I don't think so. लेकिन shout out है. Gallas has played left back. Got a brilliant comment. गैलस को मैं स्टार करके रख रहा हूँ. I'll tell you why in just a minute. लेकिन और कोई बता दो भाई सब लोग. ओके, Overlord says, by no abusive language is allowed on the stream. This is a warning, one and final warning to born to be a barking fan. By no abusive language is allowed in the stream. Let's not get personal. All we can do is you can have banter. That's a very thin line, but at the same time you have your opinion. भाई आप लोग मेरे पैनल, मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ तो आप लोग मुझे और फेलो सब्सक्राइबर्स को रेस्पेक्ट दीजिए. तो भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, बट want to be a barking fan, do not use abusive language. It's not allowed. So if someone has given you time out, then it's probably worth it on second thoughts. But anyway, left back,
Bainbridge. I think कहीं ना कहीं Jack, but would you be tempted to put Azpilicueta or Felipe Luis because 2014-15 में that combination won us the Premier League, or would you say Bainbridge again? For people who don't know Bainbridge, yes, Bainbridge is infamous. We all know that the guy went to City, but he was basically a Southampton boy coming to Chelsea, or Chelsea through and through था for a good while. Yes, he had John Terry के साथ में. You all know what happened. किसी को नहीं मालूम है, जस्ट गूगल वेन ब्रिज या जॉन टेरी, विल गेट टू नो द स्टोरी. बहुत ही कंट्रोवर्शियल था फॉर अ गुड वाइल. उसके लिए जॉन टेरी को रेजिग्नेशन देना पड़ा था. इंग्लैंड कैप्टन फैबियो कपेले को रेजिग्नेशन देना पड़ा था because of that. John Terry had was in other things as well, obviously racism and other things which happened with Rio Ferdinand and Anton Ferdinand. लेकिन वेन ब्रिज was one जो बहुत ही इंजरी प्रोन थे, but when he did well, he did really well. Or the unlucky part of Wayne Bridge was that he was having Ashley Cole in front after a few years. पहले couple of years he was playing along with Celestine Babiaro, तो वो रहते थे लेकिन इंजर्ड रहते थे. बाद में Ashley Cole आ गया. That was the main problem. Gadget अच्छा हो, nice to see. Come on विशेष, Kennedy तो नहीं. By LM10, this is not required to be told. It's okay, bro. This is not required to be said. It's okay. But Alonso, the Barca legend, Chelsea legend, मैं बोलूंगा, not Barca. Fiorentina legend, Barca legend, not yet. No Alonso, just वाला बोल रहे. Okay. Cole, Alonso, Chile. चलो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ. Yes, Paritosh, it's real. Manav disagrees. But you know what? Maybe I'm an old school. Maybe मैं थोड़ा nostalgia में रखता हूँ. The fact is Wayne Bridge, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना, the pivotal moments जहां पर मैंने चेल्सी फैन प्रॉपर एक फैनेटिक बनाना, वेन ब्रिज इज वन ऑफ द रीजंस. ग्रोंकियर इज वन ऑफ द रीजंस. कहीं ना कहीं मुझे लगता है जोला इज वन ऑफ द रीजंस. जोला व्हेन ही मेड कैरेगर स्मेल द ग्रास, यू ऑल नो दैट. रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, वो था 2002 में, 2002-3 वाला सीजन में. 2003-4 में वेन ब्रिज ऑब्वियसली डिड दैट. आई नो 2003-4 वाज ग्रोंकियर जब हमने जीता था लिवरपूल के अगेंस्ट, बट वेन ब्रिज एज अ लेफ्ट बैक scored that goal at, if I'm not wrong, at Highbury, and this was a crazy result for Chelsea because we have beaten the invincibles Arsenal in that year. 2004 की बात है ये, और crazily good. 2003-4 Wayne Bridge for me when fit was superb, very underrated. No one said what about this guy, कौन था भाई वो रशियन लेफ्ट बैक, क्या नाम है, मैं नाम कैसे बोल रहा हूँ भाई. कम ऑन अंकित, क्या हो गया. Yuri Zirkov कोई नहीं. I think कहीं ना कहीं under Ancelotti he did decent as well. नहीं, anyone? No. Dishang, nice to see you as bro always. But कोई नहीं. I think Wayne Bridge मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट बैक. अगर देखता हूँ क्यों हेट दे रहे हो मुझे. आर्सेनल फैन अपना ओपिनियन दे सकता है इस चैनल पे. अंकित भाई प्लीज रीड माय कमेंट. Want to be a barking fan? I will read your comment if your comment doesn't have any abuses. ठीक है. So people give want to be a barking fan space and let him continue for now. मैंने वार्निंग दे दिया है. होपफुली यू अंडरस्टैंड माय वार्निंग. गाली गलोच नहीं करने का, पर्सनल नहीं होने का, लेकिन आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली दे सकते हो. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. रायन बर्ट्रैंड, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो अगेन, क्योंकि मैं चेल्सी 11 पिक कर रहा हूँ. चेल्सी करियर में आई थिंक इज ब्रिलियंट. प्लेड इन द चैंपियंस लीग फाइनल. आई थिंक बेनिटेज के अंदर बहुत अच्छा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है रायन बर्ट्रैंड did not live up to the expectations. और कहीं ना कहीं even Jose Mourinho disappointed him, सच में बोलूं तो, क्योंकि I think in that year Felipe Luis को खरीदा गया था and Ryan Bertrand had to go on loan. नहीं तो Ryan Bertrand could have been a shout absolutely. आ रहे midfield पर आ रहे overlord absolutely. Bridge did better and got more time than anyone except Alonso, but Cole and Bridge were defensively better. 100% agreed. By Asia Del Hono, Jack in the house, are you still there? Remember Asia Del Hono. William Gallas, हाँ यहाँ सेंटर बैक्स में आ जाते. चलो भाई, वी आर पिकिंग सेंटर बैक्स. एवरीवन, मुझे चाहिए 4 सेंटर बैक्स आपसे. 2 स्टार्टिंग सेंटर बैक्स कोलन दीज 2, बैकअप सेंटर बैक्स कोलन दीज 2. ये ऐसा कमेंट चाहिए मुझे सबसे. स्टार्टिंग सेंटर बैक्स अगेन लास्ट 20-25 सालों में चेल्सी के लिए कौन है. मतलब विलियम गैलस एक शाउट डेफिनेटली दूंगा मैं. प्रॉब्लम विद विलियम गैलस क्या है लूसी, आई नो, मैंने इसलिए बोला था आई विल कम बैक टू दिस. William Gallas has played left back, has played right back. He was बहुत ही important because Wayne Bridge injured रहा करते थे, तो वो कवर करते थे Paulo Ferreira और Wayne Bridge को when they used to miss. ठीक है, at full back और center back में he used to be the third choice after Tery and Carvalho. Problem with William Gallas was that एक तो वो खेले हैं Spurs और Arsenal दोनों के लिए, तो वो ही थोड़ा सा रेड फ्लैग है. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ,
कोई झूठ नहीं। आई नो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोलोगे बाकी प्लेयर्स का क्या, पेट्रचेक का क्या, वो भी आर्सेनल के लिए खेले, कुडिचिनी क्या, वो भी स्पर्स के लिए खेले, बट विलियम गैलास डिड नॉट लीव इन अ गुड वे। विलियम गैलास जो भी उन्होंने अर्न किया था, आई नो वो रो रहे थे जब चेल्सी स्कोर्ड दैट, और अदर कंसीडर्ड दैट गोस्ट गोल अगेंस्ट लिवरपूल। मुझे याद है विलियम गैलास ने थ्रेटन किया था टू रनियरी कि अगर मुझे जाने नहीं दो तो मैं ओन गोल मारूंगा। रनियरी ने एक्चुअली बोला है, रनियरी को मैं ट्रस्ट करूंगा। तो भाई कहीं ना कहीं ही टुक अवे हिज लेगेसी फ्रॉम चेल्सी टू सम एक्सटेंट। देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। टेरी कार्वालियो आई थिंक विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट होनी चाहिए। एनीवन भाई, यहाँ तो कोई डाउट भी होना नहीं चाहिए। टेरी कार्वालियो या आप बोलोगे तियागो सिल्वा, जस्ट वाइला बोल रहे त्यागो सिल्वा। भाई टेरी को तो लिख देते, चलो टेरी तो मैंने बोल दिया, मेरा माई माई ऑल टाइम 11 विद ऑल योर हेल्प एज वेल। तो जेटी तो बनते ही है, तो जेटी तो बनते ही है, एंड जेटी फर्स्ट चॉइस है। सेकंड चॉइस में आएंगे। और पार्टनर क्या है, स्टार्टिंग पार्टनर अगेन टेरी ने खुद ने बोला है कि यार व्हाट इफ आई प्लेड, आई विश आई प्लेड विद सिल्वा। वो कहीं ना कहीं आई थिंक इज बीन मिस्ड। टेरी एंड सिल्वा, कार्वालियो एंड इवानोविच बेंच। ओके, इवानोविच कुड हैव प्लेड सेंटर बैक बी, बिल्कुल। देसाई टेरी, दैट इज अ गुड चॉइस। देसाई, अब ये अगेन पीपल माइट नॉट बी नोइंग देसाई, मार्से देसाई हैड लिटरली वन एवरीथिंग देयर इज इन फुटबॉल। और मार्से देसाई आए थे चेल्सी में, ठीक है। और when he came, Terry, if I remember right, made his debut under Marcel Desailly captaincy, ठीक है। और उस समय टेरी ने बोला मैं उनके बूट्स क्लीन करता था एंड लिटरली यूज्ड टू बी शैडो। उन्होंने टीच किया मुझे। एंड एनीवन हु वाज मार्सेल देसाई's पार्टनर, उनको भी बहुत शाउट आउट देना पड़ेगा। फ्रैंक लेबफ, फ्रैंक लेबफ वाज वन ऑफ दोस रेयर चेल्सी प्लेयर्स जिन्होंने जीता था वर्ल्ड कप बीइंग अ चेल्सी प्लेयर। बहुत कम है। डज एनीवन नो हु ऑल वर द प्लेयर्स जो चेल्सी में रह के वर्ल्ड कप जीता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप किन्होंने जीता है? आई थिंक मार्सेल देसाई केम आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जस्ट आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप। एंड फ्रैंक लेबफ ऑलरेडी थे चेल्सी में। फ्रैंक लेबफ वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक टेकर, ब्रिलियंट पेनल्टी टेकर एज वेल, बाय द वे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चेक करिए, वो अभी ESPN में आते हैं फॉर पीपल हु डू नॉट नो। रिकार्डो एंड जेटी, सब सिल्वा एंड केहिल। ओके, दैट्स अ शाउट, नाइस वन जैक, मैं याद रखूंगा इसको। भाई आर्सेनल फैन और क्या कुछ किया है क्या, और भी कुछ? मुझे और तो नहीं नजर आ रहा यार। बट अगेन इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज द कमेंट यू कैन ऑलवेज सुपर चैट ब्रो, जस्ट सेइंग, दैट्स एन ऑप्शन। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया मूड में हूँ। टेरी एंड ऑब्वियसली कार्वालियो, टेरी कार्वालियो, जेटी, थियागो सिल्वा, कार्वालियो एंड इवानोविच। इंटरेस्टिंग, आप लोग सब इवानोविच को सेंटर हाफ डाल रहे हो। थियागो सिल्वा डिजर्व इट। रूडिगर, हाँ रूडिगर ब्रो। David Luiz, Ruturaj, thanks यार। As much as David Luiz was shit towards the end of his career, I know by the way कोपा लिबर्टडोरेस उन्होंने जीता है, for people who might not be knowing, 2 दिन पहले। तो David Luiz बिग अप यार। मैं तो बोलता हूँ David Luiz has to get a shout out। David Luiz और Gary Cahill, two of the underrated center backs in Chelsea history। लेकिन रूडिगर को हम बोल रहे, रूडिगर रिमेंबर चैंपियंस लीग विनिंग रन, एंटोनियो रूडिगर, वेरी क्रूशियल। चैंपियंस लीग कितना जीता है चेल्सी ने? उस सेकंड चैंपियंस लीग में रूडिगर वाज ह्यूज, थियागो सिल्वा वाज ह्यूज, फर्स्ट चैंपियंस लीग में डेविड लुइस वाज ह्यूज, गैरी केल वाज ह्यूज। बट प्रीमियर लीग्स जब आप देखते हो लॉन्ग टर्म 25 साल, आई एम लुकिंग एट प्रीमियर लीग्स एज वेल, नॉट जस्ट चैंपियंस लीग। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा मेरा चॉइस ये है कि एज मच एज Thiago Silva might get there अगर by chance next year somehow we go on to win the Premier League, but the fact is Carvalho has been so close to winning the Champions League with Chelsea against Manchester United. I think it's got to be Carvalho. I think मैं Carvalho को डालूंगा। Terry Carvalho was absolutely fantastic और एक केमिस्ट्री थी, बहुत ही स्ट्रेंज केमिस्ट्री थी। जेटी brilliant, on the strength, brilliant on the long passes, Carvalho brilliant on reading the ball, brilliant on मतलब playing out from the back। भाई what a brilliant combination. I don't think it couldn't have been better. Carvalho again one of the most underrated center halves of all time। देसाई को क्रेडिट दूंगा डेफिनेटली टू गेट जेटी टू दैट लेवल, मैं डेफिनेटली दूंगा। बट आई डोंट नो, मतलब अगर मैं बोलूं बैकअप्स, बैकअप्स यहाँ पर, क्योंकि देसाई आई नो यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चेल्सी जहां पर हमने वी हैड अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स। देसाई यूज्ड टू बी द कैप्टन, आई अंडरस्टैंड। लेकिन थियागो सिल्वा आई थिंक ही डिजर्व्स डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक थियागो सिल्वा कहीं ना कहीं अनलकी भी है दैट ही इज नॉट हैविंग सच अ प्राइम टीम विद हिम। नहीं तो थियागो सिल्वा मे बी वुड हैव बीन अ प्रीमियर लीग विनर। तो एक बैकअप इज थियागो सिल्वा फॉर मी। हु इज द सेकंड बैकअप?
who would you say second backup? Again, maybe Desailly, अगर आप बोल रहे हो ओल्ड स्कूल चेल्सी जो नींव रखी जिसने चेल्सी की सेंटर बैक पार्टनरशिप्स के लिए, मे बी फ्रैंक लबर्फ, लेकिन रूडिगर में भी, लेकिन आई डोंट नो. अगर मैं एक बोलूं तो आई थिंक प्रोबेबली द फैक्ट इज द गाय केम टू चेल्सी ट्वाइस. और जब आया था डेविड लुइस, रिमेंबर, मैं भूल नहीं सकता, वो एक जनवरी ट्रांसफर था अलॉन्ग विद फर्नांडो टोरेस. और अगेन रिमेंबर इट्स माय चेल्सी 11. तो केहिल, रूडिगर, एवरीवन को बिग शाउट आउट है. डिसाई, गैलास, एवरीवन भाई. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेविड लुइस जब आए थे और जो बेंफिका से आए थे, एंड ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट नो एवरी एनीवन रिमेंबर्स दैट गोल. द सेलिब्रेशन ऑफ डेविड लुइस, जो डेविड लुइस एज अ कैरेक्टर थे, हिज फ्री किक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जो 2013 का हमने यूरोपा लीग जीता, डेविड लुइस वाज एब्सोल्युटली इंस्ट्रूमेंटल उसके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. 2012 चैंपियंस लीग भाई, ही वाज प्लेइंग ऑन वन लेग. यस, बहुत सारे मिस्टेक्स, बट कहीं ना कहीं ही वाज आल्सो अनलकी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैड Mourinho who didn't get along well with David Luiz. 2013-14 वाले सीजन में ही प्लेड इन मिडफील्ड इन अ फ्यू गेम्स. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं डेविड लुइस को रखूंगा. बट अगेन लेट्स मूव ऑन टू राइट बैक. यहाँ पर यस आई नो मैंने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया होगा विद डेविड लुइस बीइंग पिक, बट प्राइम डेविड लुइस है अगेन, क्योंकि मुझे ये गूज़बम्प्स देता था. आई लव्ड दिस गाय. आई नो मैं खुद हेट कर रहा था एक साल के लिए जब ही वेंट टू पीएसजी एंड ही सेलिब्रेटेड अगेंस्ट अस. ये भी बोलूंगा थोड़े माइनस पॉइंट लेता है लाइक विलियम गैलस बिकॉज ऑफ दैट. बट आई फील ही गेट्स अबव रूडिगर एंड अबव से केहिल फॉर मी बिकॉज ऑफ द शेयर क्वालिटी, sheer leadership, एंड ऑफ कोर्स एक होता है ना ऑफ द फील्ड, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जो टॉरेस को पकड़ के करता था भाई मैच के पहले, किसी को याद है क्या करता था भाई? मतलब ही वी यूज्ड टू गो मैड यार, जो टॉरेस के साथ करता था ये पता नहीं. डेविड लुइस भाई हैड हिज थिंग एब्सोल्युटली. राइट बैक भाई, सब लोग कांटे कांटे बोल रहे, राइट बैक भूल गए आप लोग. कोई नहीं, बट राइट बैक आपने सब लोग ने कमेंट नहीं किया क्या? राइट बैक, राइट बैक, राइट बैक. चलो मैं सीडीएम में आने वाला हूँ, आई एम स्टारिंग दोस्त. लेकिन कर्ट जुमा का शाउट आउट बिल्कुल. हाँ, बोसिंगा राइट बैक के बैकअप भाई. राइट बैक, इज इट सो ऑब्वियस दैट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे राइट बैक का? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है. अगेन फॉर पीपल हु माइट नॉट बी नोइंग, जस्ट लुक इट अप. मैं थोड़ा सा सरप्राइज करूंगा लोगों को यहाँ पर, हो सकता है. परितोष एक बहुत अच्छा नाम लिए और उसी मोड में मैं भी जा रहा हूँ. परितोष ने बोला है इवानोविच, एस्पी, रमीरेस और जेम्स. और आप बोलोगे रमीरेस वाज रियली अ राइट सेंट्रल मिडफील्डर, ही वाज अ सेंट्रल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, आई एग्री. लेकिन राइट बैक भी खेलते थे अंडर एवीबी, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट विंग और राइट बैक यूज्ड टू प्ले. देन वी यूज्ड टू हैव माइकल एसियन. माइकल एसियन ने बहुत मैचेस खेले राइट बैक. गैलस का ऑलरेडी नाम ले लिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ चेल्सी, दो prime Chelsea of 2004 to 2008. Gallas and Essien played a lot of games at right back. Not just them, उसी टीम में प्राइम चेल्सी की बारे बात करो, people might not remember, there were stop gaps. हमारे पास थे, एक थे लसाना डियारा towards the end, and एक और थे जेरेमी. early 2005 में जेरेमी was there, he was brilliant as well. भाई I am very surprised that one legend, everyone is missing out one legend's name at right back. He used to play left back as well, लेकिन उनका राइट बैक, उनका राइट फुट मेन था. आई एम वेरी सरप्राइज्ड. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इवानोविच, एस्पी, रीस जेम्स. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ देम एब्सोल्युटली. एंड प्रोबेबली आंसर उन तीनों में से ही होगा डेफिनेटली. लेकिन एक लेजेंड ऑफ चेल्सी यू ऑल आर मिसिंग आउट. ही वाज, मतलब लॉन्जिविटी के हिसाब से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्लेयर जो चेल्सी स्क्वाड में थे. ही हैज इवन वन द चैंपियंस लीग विद चेल्सी एंड विद पोर्टो. आप लोग सब भूल रहे हो, दिस वाज अ क्रेजी transfer in the first instance, लेकिन he was a mainstay in the Chelsea squad for a very long time before Ivanovic. Melchior, yes, आफ्टर मेलक्योर जो आए थे, मेलक्योर को भी शाउट आउट है, डच राइट बैक भाई, नाइस टू नो दैट. अजिंक्य मेलक्योर को आपने याद किया नहीं, जो को राइट बैक नहीं थे. फरेरा भाई फाइनली आ गया. पाउलो फरेरा को शाउट आउट है भाई. व्हाट अ एब्सोल्यूट सर्वेंट ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब. आई लव द गाय टू द कोर. बहुत ही मैं बोलूंगा वीक लिंक थे, झूठ नहीं बोलूंगा. लाइक इन आसिया डेल हॉर्नो, ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन फुल बैक, बट पाउलो फरेरा एंड हिज रन्स नो वन कैन फॉरगेट. अटैकिंग फुटबॉल हमारी जो चलती थी, अ लॉट ऑफ इट केम फ्रॉम फुल बैक्स, स्पेशली पाउलो फरेरा. हाँ, कॉट ऑन द डिफेंस क्योंकि फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे. बट ओके चलो, जैक ने बोला था, जैक को शाउट आउट है. सॉरी ब्रो, आई माइट हैव मिस्ड इट. जैक, लाइक आई सेड, राइट बैक्स, आई probably saw the messages late, but big up to Jack and everyone, Ajinkya and everyone to say it.
लेकिन पाउलो फेरेरा का शाउट आउट है. हैविंग सेड दैट, रीस जेम्स स्टिल मेकिंग हिज मार्क. Yes, Reece James was huge in the 4-all Ajax match. Who can forget भाई? 4-all जो 5-4 ऑलमोस्ट हो गया था आस्पिलिक्वेटा के गोल से, अगर वो हैंडबॉल नहीं दिया जाता. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स गॉट टू बी इवानोविच एंड आस्पिलिक्वेटा. प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? स्टार्ट कौन करेगा और बैकअप कौन होगा? हाँ, ये मैं रीजनिंग क्विकली दूंगा. अगेन सब लोग लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करिए. लेकिन इवानोविच, आई एम गोना स्टार्ट. पीपल हु नो दे नो. जो मैंने दिखाया था इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रीम में स्लाइड्स अगेंस्ट एवर्टन, दैट मैच 6-3 क्रेजी मैच, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लिवरपूल इन द चैंपियंस लीग, भाई लिवरपूल डरती थी भाई इवानोविच से. आई एम नॉट इवन जोकिंग. लिवरपूल ऑफ 2005 टू 2000 सॉरी 2008 टू 2012 जो पीरियड था ना, जहां पर इवानोविच वाज जस्ट साइन एंड ही केम ऑन बर्स्ट ऑन टू द सीन, they used to get scared. 2008 9th, if I remember right, crazy game we had. 4-all, Ivanovic scoring I think 2 goals in that 2-legged affair. 7-5 or something he won against Liverpool. I think Ivanovic going forward defensively itne strong in his prime, I think he has to be there. Or Azpilicueta, because his best in Chelsea has come as a right centre back या right wing back, not really right back, तो इसलिए उनको मैं डालूंगा. बट Azpilicueta has literally won everything that you can as a Chelsea player or as a player in the as a player, not even the league generally. तो Azpilicueta को definitely मिलता है एक place on the bench, but Ivanovic starts for me. I don't know if you all agree with me. Aspi, if it James he can be. Like हमने बोला था for other players as well. If basically they continue this way, they can get there. But Reece James, not at this point in time. Ivanovic and Azpilicueta का ज़्यादा legacy है. In fact, मैं तो बोलता हूँ Ferreira comes even before Reece James as things stand. Ferreira has literally won everything with Chelsea. Everything. बोसिंग का shout out यार, come on. आप मजाक कर रहे हैं I know, but कोई नहीं. ओह या बिल्कुल. भाई मैं कल ही देख रहा था, इवानोविच का एक वीडियो था यार, बहुत ही बढ़िया वीडियो था. वेयर आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव सीन दैट वीडियो, वेयर आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू हैव. ये था आई थिंक हजार्ड, सैमुअल एटू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दियाबी एंड डेम्बाबा एंड इवानोविच. एक वीडियो में है वो यूनिसेफ या यूएफए का कोई वीडियो है. वहां पर उन टेरी इज देयर, टेरी सेज समथिंग एंड इवानोविच को रिपीट करना है. और जैसे ही बोलते हैं भाई, हजार्ड एंड डेम्बाबा एंड एटू बर्स्ट आउट लाफिंग. हजार्ड एटू से अपना उसका हैंकी लेके पोछते अपना माथा. क्रेजीली गुड. बाय द वे, शाउट आउट टू विक्टर मोसेस, बट प्रॉब्लम इज वी आर नॉट प्लेइंग विंग बैक, सो दैट्स व्हाई. बट कोई नहीं. एंड यस, या लॉट ऑफ वीडियोस इन फैक्ट. बट कोई नहीं, लेट्स गो टू डीएम. और डीएम के मैं कमेंट्स देखा था आप लोग का, तो शिट, हाउ कैन आई मिस पाउलो. होता है, इट हैपेंस. भाई डीएम के मैं कमिंग बैक टू दी कमेंट्स. बाय द वे, शाउट आउट टू ज़ापाकोस्टा. मुझे अच्छा लगता था, आई नो लॉट ऑफ देम डू नॉट लाइक हिम, बट आई एक्चुअली लाइक, ही वाज एक्चुअली गुड अंडर सारी, आई फेल्ट. बट कोई नहीं. लेट्स सी डीएम में आप लोग क्या बोले थे. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द कमेंट्स. ऊपर जा रहा हूं भाई सब लोग. Meanwhile, yeah, bilkul. Just while like I said, I might get emotional in the stream, and I'm already am. But I'm glad that some of you are able to relate and just remember the best moments of Chelsea. And sometimes we need to do that. And thanks to Mourinho's birthday, आज मैं सोचा is the day, and along with Tuchel, day where he was appointed. Why not, right? भाई मैं देख रहा हूँ भाई, सब लोग कांटे बोल रहे. पेटी, इमानुएल पेटी was good, but the fact is he also played for Arsenal. I don't know. शाउट आउट जाता है एंगोलो कांटे और पेटिया है. डीएम देखते हैं सब लोग. लैम्पार्ड, मैकेलेले, एसियन. ओके. जॉन ओबी, मिकेल, मैकेलेले. Again, remember, I'm picking my Chelsea all-time 11, जहां पर I got goosebumps looking at them play, or I kind of like their game of play at the end of the day. लेकिन मैं आप लोग का सब देख रहा हूँ, आप लोग की चॉइस क्या है. दर्शन बोल रहे कांटे, रमीरेस, एसियन, मैकेलेले. बेसिकली यहाँ बेसिकली पहले डीएम पिक कर रहे हैं अपन. तो डीएम में अगेन प्रॉपर डीएम पोजीशन के लिए मैं बोलूँ तो आई डोंट नो, मतलब शाउट आउट दे सकते हैं, काफी शाउट आउट दूंगा मैं. अगेन मतलब मैकेलेले विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट हैज टू बी देयर. करेक्ट, मैकेलेले तो हैज टू बी देयर. आई डोंट थिंक देयर इज इवन अ डाउट वहां पर. लेकिन आई थिंक एक जन जो हम भूल रहे हैं, एक सेकंड, वेयर इज वेन ब्रिज, है ना, लेफ्ट बैक पर है. कोई नहीं. एसियन, लैम्पार्ड, मैकेलेले, एंगोलो, रमीरेस, माइकल बालाक, मैकेलेले फुल स्टॉप, मैकेलेले, जॉन ओबी. चलो कोई नहीं भाई. हाँ, ये वाला चीज मैं एड्रेस करने वाला हूँ. मतलब आई डोंट नो इफ सब लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर रहे हैं 1.5 साल से चैनल पे. आई डोंट नो कितना आप लोग ने मुझे सुना है इसके बारे में. तो एसियन वाज मोर लाइक अ बॉक्स टू बॉक्स. अजिंक्य, ये मैं लेने वाला हूँ.
देखिए, फॉर मी, एज मच एज द पोजीशन इज नेम्ड क्लाउड मैकेलेले, मैकेलेली रोल हम जानते हैं, प्रॉपर डीएम रोल पहले होता था, रजिस्ट्रा पहले होता था, प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर, देन केम द मैकेलेली रोल, बिकॉज क्लाउड मैकेलेले वाज अ डिस्ट्रॉयर जो बहुत अच्छे थे पासिंग में भी। लेकिन माइकल एसियन, अब माइकल एसियन वाज अ बाइसन, माइकल एसियन बुलाते जाते थे बाइसन। बाय द वे मैटिच को भी शाउट आउट है, एब्सोल्युटली मैटिच भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ मैटिच वाज अ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस टू विन द 2015 प्रीमियर लीग, एब्सोल्युटली। लेकिन एसियन के बारे में बोल रहा हूँ, एसियन बुलाते जाते, उनको बोला जाता था भाई ही वाज अ बीस्ट, ही वाज अ बाइसन। देयर वाज अ रीजन, क्योंकि जब एसियन भाग, प्राइम एसियन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ जब वो लियोन से आए थे, जस्ट 2005 की बात कर रहा हूँ, अंटिल 2009, वो जो 4 साल थे ना, अंटिल 2008 में भी तीन तीन चार साल थे। माइकल एसियन जब ही यूज्ड टू हैव द बॉल, नो वन, एंड आई मीन नो वन, लिटरली नो वन कुड टेक द बॉल ऑफ हिम, नो वन। आप बोलते हो कांटे इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वो कोई भी है ना एट इज प्राइम कैन ब्रेक अप एनी प्ले, अग्रीड। Michael Essien had the legs. Michael Essien was a bison, remember, bison is self explanatory, उनका नाम ही था। बट साथ साथ में माइकल एसियन was a goal scorer, पता नहीं कितने लोगों को याद है, द गोल इज स्कोर्ड इन दैट हार्ट ब्रेकिंग मैच फॉर ऑल चेल्सी फैंस, दैट ग्रेट मैच फॉर बार्सिलोना फैंस, 2009 का, द गोल दैट इज स्कोर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग टू बिगिन, व्हाट अ फैंटास्टिक लेफ्ट फुट स्ट्राइक, दैट वाज माइकल एसियन। आर्सेनल, प्रिटी श्योर सब लोग ने देखा होगा, 2-2, माइकल एसियन कम्स इन, लैम्पार्ड देते हैं उसको प्रसाद, ले ले भाई तू बॉल ले, माइकल एसियन हिट्स, भाई कर्व करती है, पता नहीं लेफ्ट विंग से जाकर सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन तक कर्व करती है बॉल और जाता है गोल। वेलेंसिया, पता नहीं आप लोगों को कितने कितने लोग को याद होगा, ही स्कोर्ड एन एब्सोल्युटली क्रेजी गोल अगेंस्ट वेलेंसिया, बहुत ही नैरो एंगल था, ही वाज प्लेइंग राइट मिडफील्ड, ठीक है, और ही गोज इन द राइट विंग, और व्हाट एन नैरो एंगल, बहुत ही क्रूशियल गोल, इट वाज अ नॉकआउट स्टेज ऑफ द चैंपियंस लीग अगेन, प्राइम वेलेंसिया की बात हो रही है यहाँ पर, नॉट जस्ट सिटी वेलेंसिया जो आज के दिन में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो माइकल एसियन कुड डू द डर्टी वर्क, ही कुड डू बेसिकली गेट यू गोल्स, और उनके पास एक फिजिकलिटी थी, उनके पास एक रीडिंग ऑफ माइंड थी, प्लस एक लीडरशिप थी। माइकल एसियन वाज अ टीम मैन, उसने खेला सेंटर बैक, राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट सेंट्रल मिडफील्डर, राइट मिडफील्डर, भाई खाली गोलकीपर नहीं बने और सेंटर फॉरवर्ड नहीं बने, माइकल एसियन वाज दैट। एंड क्योंकि आज मोरिनियो का ये है, बर्थडे है और स्पेशल स्ट्रीम है डेडिकेटेड टू मोरिनियो, हाउ कैन माइकल एसियन नॉट बी इन दिस टीम? माइकल एसियन वाज, वो मोरिनियो को बुलाता है डैड, दैट इज व्हाट इट इज। जॉर्जिनियो को डेफिनेटली शाउट आउट है, यस, काफी लोग बोले भाई एसियन, मैकेलेली, बैलक, रमीरेस और मैटिच, इनके बीच में आप जॉर्जिनियो को नाम कैसे दे रहे हो? लेकिन मैं दे रहा हूँ जॉर्जिनियो को, बिकॉज एज अ डीएम ही हैज टू गेट देयर एब्सोल्युटली। बट थैंक्स जस्ट वाला, अभी भी बहुत बाकी है, विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द, क्योंकि मेन इज द फॉरवर्ड लाइन, विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट यू माइट नॉट हैव सीन इनफ, नॉट एवरीवन बट सम माइट नॉट हैव सीन इनफ, आई बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन मोमेंट्स, और शाउट आउट दूंगा, थोड़ा डिबेट्स होगा, प्लस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम विल कम बैक टू ट्रांसफर्स भी एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर भाई सॉरी ऑल द मैकेलेली फैंस, एंड आई नो मैकेलेली इज अ गोट इन दैट पोजीशन, लेकिन भाई मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइकल एसियन को। शॉक्ड एनीवन? यस, बॉक्स टू बॉक्स, बट डीएम भी ब्रिलियंटली करते थे, एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट इट। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक बोलूंगा दैट इवन माइकल बैलक कुड प्ले दैट रोल, पीपल माइट नॉट नो, चेल्सी के लिए माइकल बैलक यूज्ड टू प्ले मोर लाइक अ होल्डिंग रोल, बहुत बार he used to not be as forward as what to Bayern Leverkusen or Bayern Munich days में थे, absolutely. मासे देसाई, डेफिनेटली शाउट आउट दिया है गौरव, आप लेट ज्वाइन किए हो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ब्रो, मैंने बहुत लोगों के बारे में बोला है, अगेन इट्स माई थिंग, तो थोड़ा सा मासे देसाई इज ऑल्सो वन ऑफ माई हीरोज, लेकिन एट सेंटर बैक, लेकिन मुझे लगता है डेविड लुइस जो एक एड्रेनलिन रश देता था, आई थिंक दैट वाज मोर फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग। रॉस बार्कली, कम ऑन, मार्केलेले वाज पिवटल, यस बिल्कुल, इससे पहले कि लोग मुझे गाली दे, बता देते, मैं ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैकेलेले नहीं है, तो मैकेलेले हैज टू बी देयर इन दिस टीम, नो टू वेज अबाउट इट। और रूड हुलिट, आई विश रूड हुलिट को डालता, द रीजन आई एम नॉट पुट रूड हुलिट इज आई हैव नॉट वॉच्ड इनफ ऑफ हिम लाइव इन चेल्सी, याद रखिए, बाय द टाइम आई स्टार्ट वाचिंग चेल्सी, एंड अगेन मैंने स्ट्रीम का नाम ही वो दिया है, अगर किसी ने देखा है प्राइम रूड हुलिट को लाइव, then I would be putting him. I don't think I have enough sample size to put him. इसलिए रूड हुलिट को नहीं जाता. Actually, रूड हुलिट might have gotten there. Absolutely, you're right. लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्राइम माइकल एसियन
I walks into any team in the world आज के दिन में भी. That is how good he was. A prime Michael Essien. People who know it absolutely. Um, Bakayoko drink water. नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, absolutely नहीं. By the way, हाँ साग्निक, thanks for remembering यहाँ पर, because it is a stream जहाँ पर हम नॉस्टैल्जिक जा रहे हैं. एलेक्स, मैं सोच रहा था भाई एलेक्स को भी डालूं, मैं नाम लेना भूल गया साग्निक, बट बहुत ही अच्छा शाउट आउट. इनफैक्ट एलेक्स एज सेंटर बैक, मैं इतना जरूर बोलूंगा, दो मिस्टेक्स होते चेल्सी से. वन, एलेक्स आई थिंक वाज इन पीएसवी ऑन लोन फ्रॉम चेल्सी. वी गॉट हिम इन चेल्सी प्रिटी लेट, और जब आए बहुत अच्छा किए अंडर एंचेलोटी, ही डिड ब्रिलियंट, इवन अंडर एवीबी. लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन भाई एवीबी के अंडर उन्होंने खेला नहीं ज्यादा, एंड देन एवीबी सोल्ड हिम बिफोर वी वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग. इसलिए शायद एलेक्स नहीं आए. मे बी एलेक्स वुड हैव पिक्ड डेविड लुइस. डेफिनेटली साग्निक, आई हियर यू. बहुत ही अच्छा एलेक्स सेंटर बैक थे फॉर मी, एंड ब्रिलियंट फ्री किक्स एज वेल, ब्रिलियंट गोल जस्ट लाइक एसियन. भाई सेंट्रल मिडफील्डर चार ऑप्शंस है. अगेन आप लोग ने ऑलरेडी बोल दिया है एक नाम, तो भाई अगर नहीं डालो तो लोग मुझे पकड़ के मारेंगे. तो लैम्पार्ड को तो डाल देते हैं सबसे पहले. एवरीवन नोज दैट. डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट लैम्पार्ड? बेस्ट मोमेंट ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड, एनीवन इन द चैट? बेस्ट मोमेंट आपने एज अ फुटबॉल फैन जो देखा है फ्रैंक लैम्पार्ड को, बीट क्लिप्स, बीट लाइव, व्हाट वाज द एब्सोल्यूट बेस्ट मोमेंट? आई हैव वन मोमेंट इन माय माइंड जो लैम्पार्ड एज अ कैरेक्टर बोलता है. यस, लॉट ऑफ पीपल माइट पुट अ पन कि जब उसने सिटी के लिए गोल मारा अगेंस्ट चेल्सी, आई नो दैट इज देयर, बट द फैक्ट इज ही केम बैक एंड मैनेज चेल्सी. तो मैं उसको देना चाहूंगा डेफिनेटली, बट लैम्पार्ड हैज टू बी देयर. बेस्ट मोमेंट कौन सा था लैम्पार्ड के लिए? मतलब मेरे लिए ऑनेस्टली देयर आर क्वाइट अ फ्यू मोमेंट्स, और मैंने दिखाया था बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम में. Probably you'll pick the Bolton goal, ना? Bolton goal, और आप बोलोगे जहां he went on to become the greatest scorer ever for Chelsea. That might be the moment against Aston Villa. या Bolton 2005 जब हमने जीता था प्रीमियर लीग after 50 years. Yes. So that was our first Premier League title, our second league title, जो Lampard के गोल से आया था. And of course he was instrumental in those few seasons. Absolutely. 2000, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 2002 से लेकर 2012, 10 साल लैम्पार्ड वाज सुपर्ब. सिंपली पुट 10 साल ही वाज सुपर्ब, अनप्लेएबल ऑलमोस्ट एट टाइम्स. मैं तो बोलता हूँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. This was the moment. Lucy, thanks for saying it. This was the moment for me. Lampard was going, and I'm really emotional at this point in time. I'm telling you, Lampard was very, very emotional. वो बंदा खेला भी कैसे भाई वो मैच, द वे, और लिवरपूल के साथ टाइम एंड अगेन हमने देखा था एग्जिट अगेंस्ट लिवरपूल, बट ही वाज लाइक नहीं, मुझे चाहिए पेनल्टी. बैलेक वाज लाइक तू ले पेनल्टी भाई, और बैलेक, hats off to Michael Ballack, मैं इतना बोलूंगा, was a better penalty kick taker than Lampard, but Lampard used to continue taking penalties and do well, and he took that penalty as well, and he got tears in his eyes. Everyone watching got it, जो नो लाइव देखे थे, you knew it. और बिल्ड अप टू द मैच एकदम ऐसा था, लिवरपूल वापस, थर्ड टाइम लकी होगी कि नहीं वापस से लिवरपूल, लेकिन नहीं, इट वाज चेल्सी हु केम आउट ऑन टॉप. ही हैज टू बी देयर. बट एक और सेंट्रल मिडफील्डर अगर मैं डालूं तो आई डोंट नो, आई माइट हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स यहाँ पर, बिकमिंग हाईएस्ट गोल स्कोरर, व्हाई नॉट? राइट सेंट्रल मिडफील्डर पोजीशन में पहले डाल देता हूँ, यहाँ पर बैकअप्स फिर डालूंगा. अगेन हम वी कैन जस्ट पिक 4 पीपल. मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, एक जन का शाउट आउट किसी ने नहीं दिया चैट में. आई एम वेरी सरप्राइज. One guy who did absolutely brilliant as a central midfielder, Fabregas को definite shout out है. Maybe he gets into that remaining 3 options. याद रखिए लैम्पार्ड का बैकअप हमें पिक करना है, राइट सेंट्रल मिडफील्डर हमें पिक करना है, प्लस हमें राइट सेंट्रल मिडफील्डर का बैकअप भी लेना है. तो Fabregas is definitely right up there. Juan Mata in this formation मैं बोलूंगा he's more like a left winger or right winger. Actually Cam होते, but Juan Mata हम बात करेंगे absolutely. Okay. Oscar भी like Juan Mata, I don't think he played enough in central midfielder position for Chelsea, but probably he should have. In hindsight उसको खेलना चाहिए था. Shout out है भाई. लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ 2004-5. This was basically the year where Chelsea came to big prominence in England, not just in Europe. 2004-5 जब obviously we came back, won our first Premier League title, हमारा league title after 50 years. तो who are the central midfielders in Chelsea? Who were the central midfielders? इतना मैं आप लोग को एक क्लू दे सकता हूँ. ये एक शाउट आउट दे रहा हूँ, बाय द वे. मैं इनका नाम नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बट नाम नहीं देखा मैंने, इसलिए आई एम सरप्राइज्ड. This was a guy who scored a fantastic goal, and I mean a fantastic goal against Manchester United. A fantastic goal in a very important match.
a superb goal, a long ranger उन्होंने मारा था against Manchester United. He was Portuguese and he played for Atletico Madrid, Porto as well, I believe so. Porto खेला था क्या पता नहीं, लेकिन Atletico Madrid for sure. Yeah, Thiago Mendes is the one. Gaurav, thanks for saying that. But Thiago Mendes, जब हम बात करते हैं चेल्सी इन मिडफील्डर्स, हम भूल जाते हैं. मैं ह्यूज एशियन फैन हूँ, सब लोगों को पता है. यहाँ पर आई रिमेंबर माय ब्रो हैड गॉन टू गाना एंड आई एम लाइक नहीं, गेट मी एन एशियन जर्सी एंड ही डिडंट गेट इट. आई वाज लाइक सो पिस्ड विद हिम. लेकिन एशियन ने रिप्लेस किया था तियागो को. तियागो had already won Premier League with Chelsea. सब लोग भूल रहे थे. तो I think for me, Thiago Mendes deserves a shout out for sure. But the guy who is one of my heroes when it comes to central midfield, सब लोग बोलेंगे मैं लिखने वाला हूँ एंगोलो कांटे. बाय द वे सब लोग जो सरप्राइज है मैं एंगोलो कांटे का क्यों नहीं लिखा हूँ नाम अभी तक. एंगोलो कांटे is not a defensive midfielder. Engolo Kante is a destroyer in right central midfielder or left central midfielder position. And for me, that's what he does the best. राहुल मेरेलिस को shout out है, लेकिन again एक season not much, longevity नहीं थी. अगेन मैं यहाँ पर तो राहुल मेरेलिस का नाम लेता हूँ, मैं तो लूंगा रानियरी डेज में. एनीवन रिमेंबर्स स्कॉट पाकर? यस, टॉटनहम प्लेयर एज वेल. उन्होंने खेला था चेल्सी के लिए. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट वी हैड उस दिन मुझे याद ही है, मैं बता रहा था यारोसिक was there in the squad. Who else was there भाई सेंट्रल मिडफील्ड में? मनीष was there in the squad when we went on to win. Dennis Wise, thanks यार अजिंक्य, मैं वही बोल रहा था भाई, किसी ने नाम नहीं लिया of that era. Dennis Wise deserves a huge shout out. The guy had, despite playing for Leeds, had Chelsea in his heart यार, absolutely. लेकिन प्रभात is right. By Michael Ballack, for anyone who knows me by now, knows that I'm a huge, and I mean a huge Michael Ballack and a Michael Essien fan. दोनों माइकल का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, तो मैं माइकल बैलक को डालूंगा एज अ स्टार्टर. यस, एंड दे प्लेड वेल. बाय द वे मारियोस चानेच, भाई ब्रिलियंट, व्हाट अ गोल ही स्कोर्ड फॉर चेल्सी. लेकिन उस गोल के अलावा कुछ किया नहीं उसने. ऑनेस्टली स्पीकिंग. ग्रोंकियर बाय द वे ही इज अ विंगर आई नो, बट वो भी खेल सकते थे बाय द वे इन दैट पोजीशन. He scored a very important goal against Liverpool. लेकिन माइकल बैलक, again, for people who may not know, मैंने बहुत स्ट्रीम से बोला है बात, माइकल बैलक was the first guy, मैं बोलता हूँ द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसने मुझे डीएम किया था, जिसने मेरे ब्लॉग पर कमेंट किया था. द फर्स्ट सेलिब्रिटी. और हाँ, फॉर वट एवर रीजन दैट ब्लॉग डजंट एग्जिस्ट टुडे, पीपल माइट से दैट कम ऑन, ऐसे ही बोल रहा हूँ. आई यूज्ड टू ब्लॉग. और ये मैं ब्लॉग कब करता था? मैं करता था, मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली 2005 और 2009 के बीच में आई यूज्ड टू ब्लॉग. तो उस समय ब्लॉग्स और का कल्चर था. इंटरनेट वाज जस्ट काइंड ऑफ न्यू इन इंडिया. मतलब ज्यादा, मतलब घरों में आना शुरू हुआ था. एंड दैट इज वेयर वी यूज्ड टू डू ब्लॉगिंग विद डायल अप कनेक्शन एटसेट्रा. तो ब्लॉगिंग में करता था, और वहां पर माइकल बैलक ने एक्चुअली कमेंट किया था. आई वाज लाइक सरप्राइज. ही एक्चुअली कनेक्टेड टू मी एंड ही कमेंटेड एंड ही डीएमड मी. एज नॉट जस्ट फॉर दैट, माइकल बैलक, like I said, team man to the core, like a Michael Essien. मतलब he could do a lot more in Chelsea. Came on a free, won us literally everything, but unfortunately did not go on to win the Champions League क्योंकि यार he had to move on before that. But Michael Ballack has to be there for me. Di Matteo also could have played in those positions. Why not? Backups. I know I'm taking a lot of time in central midfielder because that is the core of Chelsea. Absolutely, मैं बोलता हूँ जैसे. But backups भाई, अगेन ये मेरा चेल्सी 11 है, तो मैं एनीवन नोज, कोई ना कोई बता सकते हैं who is my current Chelsea best player, who is my favorite Chelsea player in the current squad. मैं काफी गाली भी दिया उसको बाय द वे. तो बैकअप्स एट लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर और राइट सेंट्रल मिडफील्डर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक these two will take it as much as Fabregas, you would say, Matic, you would say even जैसे हमने बोला a lot of others like Kante etc. But I think Kovacic for me, अगेन मेरा 11 है. और द रीजन इज अगेन बहुत सिंपल है. बंदे ने, आप बोलोगे कुछ किया नहीं है, बट कम ऑन, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अस विनिंग द चैंपियंस लीग, इंस्ट्रूमेंटल इन अस विनिंग द सुपर कप, क्लब वर्ल्ड कप जो हमने जीता नहीं था कभी. प्लस कोवाचिच फॉर मी इज वन ऑफ दोज मिडफील्डर्स जो, मतलब जब कोवाचिच गोज रन ना, एक क्रेजी गूजबम्प वाली फीलिंग आती है, क्रेजी गेट ऑफ योर सीट वाली फीलिंग आती है, विच अगेन आई एम नॉट श्योर मेनी वुड अग्री. बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि मैंने फैब्रेगास को छोड़कर मैंने कोवाचिच को पिक किया इस पोजीशन पे, मैंने डेनिस वाइज ऑल दोज लेजेंड्स को नहीं पिक किया, और मैंने पिक किया कोवाचिच को. बट इट्स जस्ट माइन, जस्ट दैट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, सिंपली पुट. या जस्ट वाला, दैट्स करेक्ट. एंड अगेन आई विश आई वुड हैव, उस समय मतलब इतना मैं यंग था ना कि आई विश आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, आई विश आई वुड हैव जस्ट प्रोटेक्टेड समवेयर एंड टेकन इट, बट वो I didn't know that the website would be
मतलब रद्द किया जाए, नो व्हाटएवर, इट वाज अ ब्लॉग, सो आई थॉट इट विल ऑलवेज बी देयर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वेबसाइट इज नो लॉन्गर एक्टिव, बट कोई नहीं। यहाँ पर कोवाचिच, यस कोवाचिच इज द गाय, बट राइट सेंट्रल मिडफील्डर माउंट को शाउट आउट दूंगा, आई थिंक ही डिजर्व्स अ शाउट आउट एटलीस्ट, कम ऑन, एज मच एज वो करेंटली नहीं कर रहा। Kovacic is a double pivot man since Inter. नहीं, I feel that Kovacic in this position would play better because he's more leftish. I feel that, but anyway, either ways he can be there. Poet was brilliant. Very good goals he scored for Chelsea, absolutely. लेकिन मैं longevity भी देख रहा हूँ. Madrid players different gravy अंकित भैया, वो भी है, he's a winner. I think he's a winner and that makes a difference for him. भाई second वाला यहाँ पर I don't think ये भी current player है. Yes, it's N'Golo Kante. एज मच एज मैंने टियागो का नाम लिया, फैब्रिगास का नाम लिया, मैटिच का नाम लिया था, मे बी लॉट ऑफ देम आई मिस्ड इट, डेनिस वाइस का नाम लिया, रूडहुल्ट का नाम लिया, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल, लॉफ्टस चीक तो नोवेयर क्लोज विशेष, बट आई लाइक हिम, आई नो, बट नो वेज। भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कमेंट गौरव, मैं इस पर नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन इसके लिए बोलने के लिए मैं लिया हूँ, बट मच लव्स टू यू, बट 5 लंग्स का, या एग्जैक्टली भाई माइक कांटे यार, भाई जो भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं भाई, जो हमने चैंपियंस लीग जीता था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, we wouldn't have won the Champions League in 2021 if not for N'Golo Kante. How many of you disagree with this? N'Golo Kante, if he wasn't there in 2021, भाई the guy, मतलब he is, मतलब thanks man, thanks to N'Golo Kante, हमने जो जीता था, yes, Mount was brilliant, Pulisic was brilliant and Real Madrid, लेकिन Real Madrid मैच जो था, two-legged affair, N'Golo Kante, I have not seen a midfielder run as much that for Chelsea. Yes, Ramirez, you can argue. Ramirez को shout out है absolutely. लेकिन N'Golo Kante, he was spot on. By the way, I know I missed out John Obi Mikel. The reason is मैंने shorts एक किया है, अजिंक्य आप definitely check out करना. देखिए यहाँ पर the players that I liked for Chelsea, he was brilliant. No two ways about it. 2012 he was very huge. बहुत ही one of the best matches he's ever played in his life. लेकिन जॉन ओबी मिकेल को आप नहीं डालोगे ओवर माइकल एसियन, प्राइम माइकल एसियन बिटवीन 2005 एंड 2008 वाला माइकल एसियन और मैकेलेले, और वो सीडीएम ही खेलते, दैट्स द ओनली रीजन, और कोई नहीं है। मैटिच का भी सेम है रीजन, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स थे चेल्सी के लिए, बट कांटे कैरीड अस दैट टाइम, बिल्कुल एज मच एज हम लोग देते क्रेडिट टू एडन हजार्ड इन द पास्ट, यू नो, टू अ जोला इन द ओल्डन डेज, जो कैरीड अस वाला चीज होता है ना, Zola carried us for a while, then you can say Lampard in midfield carried us for a while, then you can say even maybe Hazard, and say last year you can say to some extent Mason Mount. Kante ने किया था उस सीजन में totally in my opinion. हाँ नहीं है अजिंक्य, आई हियर यू, इसलिए शायद मैंने नहीं रेट किया उसको इन द टॉप एवर फॉर चेल्सी, सिंपल एज दैट, लेकिन टॉप 5 सीडीएम्स फॉर श्योर 100%। लेकिन हाँ, दिस इज माय मिडफील्ड। चलो आ जाते हैं भाई मेन पोजीशंस में, आ जाते हैं भाई सब लोग। अगेन hit that like button, again do not forget to share the stream, हो सके तो I would like to know a lot of neutral opinion। यहाँ पर I know forward line में there will be some obvious choices, there will be not so obvious choices। भाई who is a player who I consider the GOAT? Anyone in the chat? उसका नाम लिख देते पहले। Who is the player who I consider the GOAT? मैंने 3 दिन पहले उसके बारे में एक किया था। I don't know how many of you follow my community posts as well as Instagram post as well as Twitter posts, लेकिन द पर्सन दैट आई कंसिडर एज गोट, भाई बॉबी टैमलिंग एक्सेट्रा है। गौरव, अगेन आई रिपीट, गौरव आप हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही बोलते हो मेरे भाई, मच लव टू यू, लेकिन बॉबी टैमलिंग आई हैव नॉट वॉच्ड लाइव वॉचिंग, तो ही इज आउट ऑफ सिलेबस, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ओनली फॉर द लास्ट 24 years। ड्रॉगबा डेफिनेटली, रॉबिन, तो चलो भाई सब लोगों को पता ही है बिकॉज इट्स माई चेल्सी 11, तो यहाँ पर स्टार्टर तो कोई डाउट नहीं होगा। रॉबिन started as a left winger in Chelsea, then slowly turned into right winger, जो दोनों साइड खेलते थे, but there's a reason why I'm putting Robin as the right wing। लेफ्ट विंग में कौन, मैं सेंटर फॉरवर्ड लास्ट में करूंगा, ठीक है। लेफ्ट विंग में कौन होगा? बाय द वे यहाँ पर ऑस्कर, यस ऑस्कर कुड प्ले द राइट विंग, लेकिन प्रॉब्लम इज ऑस्कर माटा काइंड ऑफ पीपल was brilliant, but they did best basically when they did best when they were playing as a cam, in my personal opinion। But विलियन, हाँ यार विलियन को भी मैं बहुत रेट करता हूँ, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग दैट यार, विलियन को मैं बहुत रेट करता हूँ, पीपल माइट नॉट रिमेम्बर, लेकिन मैंने बहुत बार बोला है विलियन को ऑन फीफा स्ट्रीम्स, मैंने बहुत बार एज विलियन खेला है, तो ही विलियन बिग अप एब्सोल्युटली। हजार्ड लेफ्ट विंग, हजार्ड चलो भाई ठीक है भाई, फाइनली जोला का, आई वाज जस्ट होपिंग फॉर जोला नेम भाई। अगेन जो लोग जोला को इनफ देखे नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैं आई वाज लकी इनफ टू वॉच 1 full season ऑफ जोला,
वन फुल सीजन ऑफ जोला मैंने देखा था, हाँ उससे पहले भी देखा था चैंपियंस लीग ईयर एंड देयर, लेकिन प्रीमियर लीग मैं 2002 से देख रहा हूँ मैच बाय मैच, राइट? तो जोला वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब इवन एट दैट एज, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, ब्रिलियंट, व्हाट ब्रिलियंट फ्री किक्स, सुपर्ब फ्री किक्स, शायद ही कोई बेटर हुआ है जोला से चेल्सी में, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, इवन लैम्पार्ड, नो वन वाज बेटर देन जोला इन फ्री किक्स, ही वाज सुपर्ब इन फ्री किक्स, बट नॉट जस्ट दैट, गेम प्ले भाई, जोला used to play with Maradona. I'm not comparing with Maradona, but I'm just saying, by Napoli elements, you know that what you're talking about, us समय. So Zola has to be in there somewhere, but we all know that I think the man जिसने literally Chelsea used to depend on him like India cricket used to depend on Sachin Tendulkar in the 90s and 2000s. जो लोग जानते हैं, but मैं डालूंगा Hazard को as a starter because yes, as much as Zola definitely deserves a shout out, he should be on the bench, लेकिन हजार्ड को अब राइट विंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है देयर वर टू फेवरेट्स ऑफ माइन, बाय द वे शाउट आउट्स और भी देना चाहिए यार राइट विंग में, अनेलका को डेफिनेटली ही कुड प्ले राइट विंग एज वेल, व्हाई नॉट, ही हैज प्ले राइट फॉरवर्ड एब्सोल्युटली, पुलिसिक नॉट रियली, लेकिन पुलिसिक काइंड ऑफ प्लेयर मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मुझे हजार्ड बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज मुझे जोला बहुत अच्छा लगता था एज वेल एज कोवाचिच अच्छा लगता है, बट राइट विंग में नाउ विलियन और जो कोल में से कौन, जो कोल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, डेमियन डफ को शाउट आउट है, लेकिन जो कोल आई थिंक मेरे लिए इन द सेकंड ईयर जो चेल्सी ने बैक टू बैक टाइटल जीते थे ना, 2006 में बात कर रहा हूँ, व्हाट अ गोल स्कोर्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो एक गोल नहीं है, आई थिंक दैट वाज इट्स प्राइम, इंग्लैंड के लिए भी ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दैट ईयर, मतलब अ प्राइम जो कोल, मतलब was he more effective than a Willian, because yes Willian defensively better थे, but a prime Joe Cole was a game changer. Remember Joe Cole एक और हेल्प किया था हमें, वन माटा could be there as well, why not, लेकिन जो कोल एक और हेल्प किए थे, जो कोल recommended Eden Hazard to Chelsea, again Pedro, of course वन माटा, पेड्रो, ऑस्कर बहुत अच्छे थे, लेकिन वही है आई थिंक पेड्रो डिड पेड्रो वाज क्रूशियल 2017 हमें लीग जीतने में, एब्सोल्युटली क्रूशियल थे, विलियन लेकिन 2015, 2017, 2019 का यूरोपा लीग, 2013 का यू नो आल्सो ही वाज, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विलियन हैज वन, 2015 में आल्सो ही वाज ह्यूज अंडर Mourinho, और Mourinho का जो सेकंड सीजन था कमिंग बैक, ही वाज द वन स्टैंडिंग एलिमेंट, तो विलियन क्या वी कैन अवॉइड विलियन, आई डोंट नो, आई एम लिटिल, मैं बहुत डिफिकल्ट चॉइस है टू बी ऑनेस्ट, बट ऑनेस्टली द गाय वाज अ गेम चेंजर, जो मैच को बदल सकता था, इट वाज जोकोल, जोकोल हैड मैजिक इन हिम, जोकोल प्राइम मैजिक हैड मैजिक इन हिम, लेकिन विलियन भाई सॉरी यार, आई एम फीलिंग वेरी सैड इन लीविंग आउट विलियन, एंड पीपल हु फॉलो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नो दैट मैं विलियन का बहुत बड़ा फैन हूं, and highly underrated player. He gave his all for his team. लेकिन when you're talking about Hazard, Zola, Robben, और Joe Cole, Willian, Damien Duff, Pedro, Oscar, Mata, I would just like to leave them out. To be honest, बहुत difficult choices. Don't get me wrong. Okay, anyway, just while you're saying none of our current players except for Tiago Silva and Kante make it even into the backups too. No one. And Azpilicueta, just while Azpilicueta does make it. Azpilicueta definitely deserves to be there in my opinion. But definitely. अनिलका को shout out है, लेकिन अनिलका में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने देखा आपका अनिलका का comment यहाँ पर, लेकिन अनिलका का मैं the reason I have not put him is one, firstly his primary position was center forward. हाँ Chelsea में used to play as a right forward more. सोलोमन कलू को भी यार शाउट आउट एब्सोल्युटली, मलूडा को भी शाउट आउट एब्सोल्युटली, व्हाट प्लेयर्स फॉर चेल्सी यार अंडर एंचेलोटी, भाई ब्रिलियंट थे वो, लेकिन अनेलका द वे दैट ही मिस दैट पेनल्टी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, कहीं ना कहीं मुझे आई हैव बैड मेमोरीज ऑफ दैट, आई डोंट नो, आई माइट बी हार्श यहाँ पर, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया हूँ। अगेन गौरव आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बोल रहे हो भाई, 1999 से बोलिए, ड्रॉगबा, हैसलबैंक, हैंड्स डाउन, लूसी बोल रहे हो, ओके हैंड्स डाउन नहीं है लूसी, हैंड्स डाउन नहीं है, लेट मी टेल यू, ड्रॉगबा तो हैंड्स डाउन है, चलो बैकअप के लिए वेट करते हैं, ड्रॉगबा अगर नहीं डालूंगा तो मैं अपने आप को मारूंगा, यू नो दैट ड्रॉगबा इज वन ऑफ माय हीरोज, so ड्रॉगबा हैज टू बी देयर, लेकिन बैकअप कौन, एंड दैट इज द लास्ट पोजीशन जो हम कर रहे हैं, who will complete this squad, you know what, 23 man squad कर लेते हैं, आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट लीविंग विलियन आउट, सच में बोलूं तो विलियन हैज लिटरली वन एवरीथिंग विद चेल्सी, विलियन वाज अ टीम मैन, तो विलियन को भाई मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर,
भाई सब लोग जो भी सुन रहे हैं ये मत बोलना कि विलियन को छोड़ा है मैंने बाहर। यस मैंने बहुत अच्छे लोग को भी सुना है छोड़ा है, लाइक वन माटा फॉर एग्जांपल, लाइक रीस जेम्स आज की टीम के फॉर एग्जांपल, लाइक अ मैटिच, बट विलियन फॉर मी हैज टू बी इन द टीम। लेकिन सेंटर फॉरवर्ड बैकअप देखते हैं। अथर्व बोल रहे हैं ओलिवियर जिरू, गुड शाउट अथर्व, मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था जिरू नाविन कम ऑन एटू नहीं, एटू हैड वन गुड सीजन बट वो भी वी डिडंट विन एनीथिंग। कोस्टा, डिएगो कोस्टा, आई थिंक ही इज गॉट टू बी देयर। डिएगो कोस्टा पुदिन, क्योंकि जो इंपैक्ट किया था 2015 में डिएगो कोस्टा वाज क्रेजी। जब मैं जोकोल को डाल सकता तो व्हाई नॉट डिएगो कोस्टा को भी। लेकिन याद रखिए मैंने फैब्रेगास और मैटिच को नहीं डाला है, तो विल आई पुट डिएगो कोस्टा एटलीस्ट। Hasselbank over Drogba because he won Golden Boot, also wearing number 9, which is cursed for. नहीं ओवर तो ड्रॉगबा तो नहीं होंगे गौरव, सॉरी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हैसेलबैंक डेफिनेटली शाउट आउट है, 100% क्लोज है टू गेट इनटू दैट। हैसेलबैंक स्लैश कोस्टा अगर सोचूं तो आई वुड स्टिल गो फॉर कोस्टा ओवर हैसेलबैंक। रीजन मैं बोलता हूँ उसका, क्योंकि कोस्टा हैज मतलब एज मच एज हैसेलबैंक वाज अ बेटर गोल स्कोरर, फॉर पीपल हु माइट नॉट बी नोइंग इट, वॉच हैसेलबैंक की वीडियोस, यू नो इट। ही वाज अ बेटर गोल स्कोरर, वो कोई भी एंगल से मार सकते थे गोल, ब्रिलियंट लेफ्ट फुट राइट फुट, ब्रिलियंट डच प्लेयर है, मैं डच फैन हूं, आप लोग जानते हो। हैसेलबैंक डेफिनेटली a better player than Costa, no two ways about it। लेकिन कोस्टा का इम्पैक्ट था टू विन अस द प्रीमियर लीग, नॉट वंस ट्वाइस, रिमेंबर दैट। आई डोंट थिंक आप वो ले सकते हो, प्रीमियर लीग जीतना इजी नहीं है। हैसेलबैंक आई नो थोड़ा अनलकी थे दैट ही डिड नॉट गेट एज मच चांस टुवर्ड्स द एंड ऑफ रनियरी, बट क्या बोल सकते हो भाई। एक जन सब लोग बोल रहे हैं यार, दो जन, आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम नॉट गॉट टू नेम्स। एंड इनफैक्ट मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, उन दो नाम में से मैं लिखने वाला हूं नाम। आई एम नॉट पुटिंग हैसेलबैंक, आई एम नॉट पुटिंग कोस्टा, आई एम नॉट पुटिंग अनेल्का, आई एम नॉट पुटिंग जिरू। as much as Giroud as one of the Champions League and Atletico Madrid जो गोल किया था, ब्रिलियंट। और यहाँ पर एक नाम आ गया, बाय द वे शेवचेंको को बिग अप, इनफैक्ट एक और नाम नहीं आया यहाँ पर, शेवचेंको को बिग अप। लेकिन शेवचेंको इन चेल्सी प्रीमियर लीग वाज अ फ्लॉप, आई हैव टू एडमिट देयर। शेवचेंको इन मिलान एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, शेवचेंको इन कप्स फॉर चेल्सी ब्रिलियंट, लेकिन नॉट इन प्रीमियर लीग, जो टीमो वर्नर भी थे इन अ सेंस। बट दो नाम अभी भी नहीं आया, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। टू नेम्स, टू नेम्स, ओके, एक हिंट ले दे सकता हूँ। दर्शन का कमेंट कौन सा था भाई, देख लेते हैं भाई, कोई नहीं, आप हमेशा यू कैन प्रायोरिटाइज ब्रो, यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज विद सुपर चैट इफ यू कैन अफोर्ड, डोंट वरीज। लेकिन दर्शन हाँ, मैंने 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 पढ़ा था, हाईलाइट नहीं किया होगा, बस कोई नहीं, मैंने पढ़ा था आपका। लेकिन दो नेम अभी भी मैं नहीं देख रहा हूँ। अगेन रिमेंबर इट इज माई चेल्सी 11 फॉर पीपल हु आर लॉयल वॉचर्स ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, नो दैट आई एब्सोल्युटली अडोर दीज टू गाइस। शेवचेंको इज एन आंसर, लेकिन शेवचेंको नॉट इन चेल्सी, इट वाज इन मिलान, सो मैं यहाँ चेल्सी 11 कर रहा हूँ। एंड he didn't play as well as what he could have, क्योंकि ड्रॉगबा was in his prime और हम नहीं खेलते थे टू स्ट्राइकर अंडर मोरिन्यो। शाउट आउट डेफिनेटली जाता है, रोबर्टो डी मटायो वाज ब्रिलियंट, ओबामयांग नो वेज, भाई थैंक्स यार, जीके थैंक्स, जीके ने बता दिया भाई। यस फ्लॉप इन चेल्सी मे बी, बट टॉरेस बिग शाउट आउट, शाउट आउट दे रहा भाई, टॉरेस भी नहीं आंसर है टॉरेस दो में से एक जन है, दूसरा जन मैं नाम लिखने वाला हूँ। द गाय दैट आई एम गोइंग टू पुट नो वन हैज नेम टिल नाउ, जो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन फर्नांडो टॉरेस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्रेस्पो का नाम मैंने देखा था बाय द वे गौरव से, और ये गौरव कटारा भी ने बोला है टॉरेस। आई थिंक दीज आर टू प्लेयर्स, यस टॉरेस अंडर परफॉर्म बिग टाइम। बाय द वे आंड्रे शर्ले का याद आ रहा है भाई, उनको शॉट आउट नहीं दिया है। आंड्रे शर्ले व्हाट अ प्लेयर फॉर चेल्सी, लव्ड हिम टू द कोर। लेकिन विलियन को मैं डाल रहा हूँ 23rd मैन एंड नॉट शर्ले। लेकिन टॉरेस गेव इज ऑल, गेव इज ऑल, उसका जो एफर्ट दिखता था ना एज अ चेल्सी प्लेयर। अगेन भाई उसने जीता था कॉर्नर जिससे ड्रॉगबा ने मारा था, माटा ने लिया था कॉर्नर, ड्रॉगबा ने मारा था इक्वलाइजर, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट। उसने मारा था बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल, उसने मारा था गोल अगेंस्ट बेनफिका फॉर अस टू गेट टू दैट लेवल। आई नो इवानोविच स्कोर्ड द विनर, बट यूरोपा लीग भी हमारा पहला। आई थिंक पीपल फॉरगेट टॉरेस हैज डन अ लॉट फॉर चेल्सी, एब्सोल्यूट शाउट आउट 100% टॉरेस को मिलता है। अजिंक्य फाइनली ब्रो मिल गया है। एंड यस Hasselbank and Gudjonsson played a two up top. Maybe none of them was a single striker. Brilliant. इसीलिए उनको रख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट से। For me, the guy, आप जब टीम मैन बोलते हो, this guy has to be there. भाई ये अभी गूजबम्स आ रहे हैं मेरे को, सच में, people who might relate to it. भाई आइडा गुडियॉन्सन, what a player यार, what a brilliant player. भाई he became a cam for Chelsea. He became a central midfielder for Chelsea. He became a right winger for Chelsea. लेकिन मैंने the beginning of the video उनका नाम लिया था,
That जो game था against Arsenal, where Arsenal were dominating us for years in the Premier League, him and John Terry stood up in that match, and John Gudjonsen was a guy जिसके वजह से Drogba settled better in the Premier League. He gave him space. Hats off to Gudjonsen. He has played for Barcelona as well. For people who don't know, bro, he was an absolute brilliant. By the way, shout out to Viali, absolutely 100%. वियाली को मैंने शाउट आउट दिया था विशेष. आई टोल्ड दैट वियाली, माटा, डी मटायो, गस पोएट, ऑस्कर, दीज आर मोर कैम्प्स. सो इस फॉर्मेशन में नहीं आते, लेकिन लेट वियाली को एब्सोल्युटली शाउट आउट है. लेकिन भाई आइडो गुडियॉन्सन हैज टू बी इन. आई थिंक फॉर मी दिस कंप्लीट्स माय चेल्सी स्क्वाड. 23rd मैन आप बोल सकते हो मे बी वियाली. अब सोच रहा हूँ, नहीं, आई थिंक मैंने डालना है विलियन को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वियाली. 23rd मैन, 23 मैन स्क्वाड करते हैं. 23rd man has to be Viali. Tammy Abraham shout out है, but a couple of seasons not much. Not that level of football. Morata nowhere close, bro. Higuain, no way. कोई नहीं. Kezman, what a flop in Chelsea, but कोई नहीं. Robin and Kezman were a Batman and Robin. People know, they know it. But yeah, this completes my team. How's my team, yeah? इसका captain, is there even a doubt? Is there even a doubt who's the captain? Come on. जॉन टेरी कैप्टन होंगे, एंड वाइस कैप्टन कौन होंगे इसके? इस टीम के वाइस कैप्टन तियागो सिल्वा या ड्रॉगबा या बैलक? चेक. इतने सारे ऑप्शंस है भाई. वाइस कैप्टन लैम्पार्ड ही होंगे यार. नहीं, ही वाज प्राइम. जो बेस्ट एवर चेल्सी टीम कौन सी लगती है? जैसे मैंने बोला, या तो ना एंचेलोटी की टीम या तो मोरिनियो की टीम. उसमें यू हैड टेरी एज अ कैप्टन, लैम्पार्ड एज अ वाइस कैप्टन. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई विल गो विद. As much as Thiago Silva, Drogba, Cech, Ballack भी हो सकते थे, Ivanovic maybe, but yeah, I'm going with this. But yeah, people, without a shadow of a doubt, best coach तो उन पर stream is already dedicated. So I am going with Jose Mourinho as a coach of this team. Assistant manager maybe Tuchel is what I would say. Conte हो सकते थे, लेकिन Ancelotti भी हो सकते थे, but I think Tuchel might have overtaken him. I don't know, I might be wrong. लेकिन अभी for the moment, क्योंकि Tuchel का भी ये this is that day when he took over Chelsea 2 years ago along with Jose Mourinho's birthday. तो उन दोनों को shout out दे रहा हूँ mainly. But again, Zola vice captain, why not? Ballack, what a leader, absolute great leader यार. I would bring Fabregas and Alonso. Like I said, बहुत difficult choice था. But again bro, 2 घंटे यार, हमने 2 घंटे तक बात किया. I hope you guys love this stream. If you love this stream, hit that like button. भाई I can't believe अभी तक 104 likes है for this stream. Come on, let's be honest, this is the go-to stream. Don't you all think so? Come on, a lot of it जो हमने सुना है about players that you might have seen, you might have not seen, बहुत सारा basically dedication to Jose Mourinho, to Thomas Tuchel, to John Terry, Lampard, Drogba, but a lot of other players जो बाकी teams के लिए भी खेले हैं. Hopefully you liked it. अगर like किया तो भाई like button दबा दीजिए. Let's get to 150 likes at least. Come on, उतना तो बनता ही है, नहीं? And remember, we are always a fan channel for all to see. We alternate between Chelsea and other teams' content. हमने बहुत करना है absolutely. So people who have missed out, don't forget to watch the first part of the stream again. बहुत सारा हमने किया है. Yes, cricket streams भी आएंगे. By the way, कल हम शायद live होंगे on Almighty Sports Plus because T20 is back. So remember, Almighty Sports Plus, do not forget to subscribe to our second channel. The link is always below. दोनों channels, and always it's a fan channel for all to see. Love you all, and of course, भाई all the best to Real Madrid, Atletico Madrid fans tonight. अच्छा मैच देखने को मिले. That's what I'm saying. And of course, congratulations against to Barca and Manchester United जो जीते अपने matches यार. Looks like a trophy is coming, Manchester United fans. I don't know. Maybe Newcastle might have something to say there. But again, a lot of FA Cup games coming on. कल अच्छे matches है. So we might be live on both the channels. एक maybe 4 or maybe we might come out with a video. Arsenal Man City का गेम है, as well as cricket है on Almighty Sports Plus. तो कोई do not worry, on both the channels will be back. But yeah, it looks like it. I know मैंने transfers भी discuss करने थे, but we'll continue it later. चलो अभी के लिए bye. लंबा